answers. Okay, so let us see like some of the basic concepts about iron element for the first session. Share my PPT. Yes. Is my PPT visible to you all? Can anyone respond? Yes, sir. Yeah, thank you. Yes, sir. Thank you, Aditya. Yes, sir, it is Thank you so visible. much. So it is just introduction to iron and its distribution. So before going to discuss about its distribution and what is iron and all, first let us discuss about what is element, iron element. So what is Fe? So many of you like these are some of the basic concepts only. So sit back and relax and just listen to like what it is or what it is shown in the PPT. You can just read out. Otherwise, you can just listen to me also. So iron is having atomic number of 26 with atomic weight of 55.845, and then it is having body center cubic structure and electronic configuration. It is having 8 valence electrons, that is 3d6 4s2. That means it is like 1s2, then 2s2 2p6, 3s2 3p6, and then 3d6 4s2. That means it is having electrons in all its K, L, M, and N shells. In general, iron is in regular conditions. Let me tell you, in regular conditions, iron is a silvery white material, and it is a metal with very easily malleable and having its ductile conditions. That means like you can stretch it or you can prepare. If you take any big chunk of iron ore, you can prepare it as thread or anything without wasting much energy. And the boiling point or the melting point of iron is like around 1800 Kelvin, and the boiling point will be around 3000 Kelvin, and its specific gravity is around 787 kilograms per meter cube at 293 kelvins. So this is a basic some of the concepts about iron element, and then before going like how it gets deposited on a crust or anything, first let us discuss like how it is in the universe. So how it has been found in the universe, and let us discuss a simple 1 minute time. So we all know like universe will be having like a number of stars, like very many of them are big stars and many of them are very small stars. That is like many of them will be having high mass and many of them will be having very low mass. So the low mass stars are like they live for much more years than when compared with the high mass stars, because high mass stars they will be like in a clear sense like it will be more 8 times more than the sun. What is sun? Sun is also a big star. So high mass stars refers more 8 times more than the suns. So these high mass stars are having capacity or capability of reaching very much high temperatures than the low mass stars. Okay, so when these high mass stars reach very much low or the very much high temperatures in its nucleus, what they do is like they fuse and they will form some kind of new elements. That is, they can fuse much heavier elements because of their heat that is produced during the uh, fusion processes. They create new heavier elements in each stage. So it takes in several stages. They take several stages, and they do so many fusion processes and the result will be they will be emitting so many heavier elements, and until they form iron, because iron is the heaviest element which can be prepared by any high mass stars in fusion processes. Once if the iron is formed through fusion processes, some energy also will be released, and that means like elements lesser than the iron or less heavier than the iron will be prepared by fusion processes, and elements that are heavier than the iron will be prepared by some of the process fission processes. So iron itself, when it formed from the fusion processes from the heavier stars, it will generate no much amount
amount of energy, and since because of its heaviness, it does not take much part in the process of fusion as well as the fission. So what it happens is it gets accumulate. It gets accumulate each and every time whenever the processes happens. So as soon as the matter or any stellar component, it is core turns into iron. That means the core part of the star, when it turns into iron, it can generate no further thermal energy or any kind of pressure. So, but at the same time, what will happen is, like because of the growing gravity within the star and pressure, it will push the other electrons surrounded by the core, and electrons surrounded by the core into closer. So what will happen is, like, because of this combination of electrons and protons from the neutrons, protons to form the neutrons, iron core would be converted to neutrons, creating a giant empty space. So such gravitational instability, what will happen is, like, it will quickly collapse the outer layers within the star, and instant energy will be released. That energy, it is called as like supernova. That means the exploding of the star would release a gigantic quantity of the matter into the galaxy. That means once the supernova happens, what will happen is, like, the heavier elements, or what are the elements which are generated within the the high mass stars, it will enter into the atmospheric system. So that is how in the universe, I believe, like iron would have come into existence. So this is what is explained just now. So what happened is, like, during evolution of high mass stars, iron core is formed by collecting iron generated in fusion reactions. The core would continue heating and growing in mass as light elements fuse into heavier elements with the accumulation of iron found by the fusion, such fusion. So what in the exploding of star would release a gigantic quantity of matter into the galaxy. This means that chemical elements up to the iron on the periodic table are produced by fusion reactions in the course of massive stars, but elements heavier than iron are produced during brief fusion reactions that occur during the supernova explosion. So this is how, like, a brief introduction about how it has been entered into the universe, and how this must have been entered into the earth. So let us discuss about this. So all of you must be knowing, like, what is this diagram given here? Can anyone tell me the parts of the earth are here? Can anyone? What are the three major parts of earth? Sir, crust, metal core, I think. So can you please tell me the composition? So what is the composition of core? What is the composition? Sir, repeat again, sir. Core. What is the composition of core? Yeah, in fact, Gaurav, thank you. Nickel and So, iron. yeah, iron is there even in the core, and mantle composition is periodic rocks. So many of the periodic rocks will be having magnesium and Fe in their components, and as well as the crust also, it is having iron component, or iron in as in integral part of the earth. So we know that iron is well within the entire parts of the earth, and but now how it got deposited upon the surface, because many of in a basic component, basically we know that iron cannot be leached out in certain conditions, or in normal conditions, because in general normal temperature, iron cannot be react with water, either it cannot be react with the air. But in certain conditions, only in some oxidizing conditions or reduction conditions, only it will be moving into mobility, or it will get accumulated in some place. So during the periods, in the initial periods of the initial periods, that means like 4,500 billion years back and all, or up to 3,500, 3.5 billion years and all, like there was no accumulation of iron oxides, but there was only the transportation and deposition of iron was there, Fe was there. So there was only leaching of silica was there, and then only iron leaching was there. So what was happening is, like,
the leached out portions were accumulated in the oceans. So when the photosynthesis action has taken place because of the algae material which was available in the oceans in a huge amount of oxygen, when it started releasing, what happened was like, immediately the released oxygen was interacted with the iron which was available within the oceans, and it started forming iron oxides. So they have formed and they converted as they formed in the layers, and which we are calling right now, in the present day we are calling them as like banded iron formations. And this is a basic like how this came into the earth. So nearly like all major iron ore deposits in the rocks are found over 1.8 billion years ago. At that time, earth oceans contained abundant dissolved iron and almost no dissolved oxygen. But what happened? The iron ore deposits began forming when the first organisms capable of photosynthesis began releasing oxygen into waters. So what happened was this oxygen immediately combined with the abundant dissolved iron to produce hematite and magnetite. Then these minerals deposit in the seafloor in a great abundance, forming what are known as the banded iron formations, as we discussed. And the bands within the banded iron formations may be because of the seasonal changes in the organism activity. Because the organism's more action was there, then more oxygen will be releasing into the environment, and then more action will be there to form the banded irons or maybe iron oxide. So deposition will be more. When the activity is less, then production of oxygen is less. That means then there won't be much of the iron deposition, but the silica depositions will be there. So that is why like we will be observing all the bands in the different thicknesses of the BIF. So what is the principal component of the iron is like it is called as siderite. That is the principal component of the iron in the meteorites. And in normal temperature, it cannot be reactive in the air, and when it is heated in the presence of oxygen, what iron can do is like it can form as a magnetite, and when it is heated in moisture and conditions, it will be forming as hematite and iron hydroxides. And at the same time, it does not react with water in the normal temperature to form any kind of hydroxides. But when it is heated, then it will be again coming into the reactions of the iron. So what are the major uses like with iron? Even in our body also iron plays a vital role. So many of us, we always, when we go to the general physician, and like sometimes he say you have some iron deficiency. Many of the opposite gender must be facing this problem, and this iron is the main substance that is taking oxygen uh, into the blood cells, that is called hemoglobin. So even in our bodies also like iron content is very much important. And since iron is, as I was actually already explained, like in outer shell configurations, it is having like two valence electrons. So what it is do is like according to the available conditions with the oxygen available environment, what it can do is like it will be emitting some two electrons from the outer shell, and it will acquire stability. Otherwise, at certain times, like, what it can do is like even it can omit one electron from M shell and two electrons from the N shell, and it will be forming F3 plus. So it will be attaining certain times two plus configuration, and sometimes sometimes it acquires plus three configuration. So this fact what allowed the people or the scientists to keep iron oxides or to study these iron oxides as a markers of the oxygen level in the atmosphere during earth evolution. That means they generally study the periods of formations of such rock deposits, that is like banded iron formations, and then red beds and paleosols, and presence of the pyrites to study. They use these all formations to study the
iron oxides to study the iron oxides and the evolution of the earth and its atmosphere. Because as I was already mentioned, like once if we know that okay, here we are getting some magnet iron formation, that means like it cannot be formed before the presence of the oxygen environment. So like at least we can have some demarcations even in the age also. So with like that, people started discovering many of the evolutionary histories based upon even iron also. And again, like it is a principal component even in all the rocks and the minerals. So with some strong magnetic properties. So what it is happening is like because of some magnetic properties, it is started playing a crucial role in generation of regional and local magnetic anomalies. So what we can do is like by studying like what it is like by studying the purifiant or bottom edges of magnetized bodies and some of the parameters. So what we can find out is like iron its accumulation can also like we can study the paramagnetic of the earth or the materials. Okay, so evidently magnetic properties of the rocks and minerals are significant factors in paleomagnetic research methods because of the are with the help of the some of the parameters what I mentioned over here, that is like a fuel pint and then bottom edge magnetized bodies and all these. I think in the next class or some other class you will be like coming to know what are these all and so basically mineralogy, if you check into the mineralogy of the iron ores are like generally represented as oxides, that is hematite is a major oxide and magnetite, that is with Fe3O4 and limonite Fe3O3 and H2O. And then some sulfides are also there, that is FeS2 and FeCO3 are the carbonates. So when it interacts with the sulfuric acid and iron, results in the formation of two sulfur compounds, that is ferrous sulfate and then some heterohydrates, that is FeSO4 and 7H2 and ferric sulfates Fe2SO4 and thrice. Because in general, iron is a metal of a medium activity, and it forces hydrogen from water solutions of such strong acids as HCl and H2SO4, forming salts with iron. So that is why, like at no presence of H2SO4 and HCl and all, like it will be forming this kind of sulfates, that is like sulfur compounds. These are very basic things. Once like when we come to know like it is there in the universe and as well as it is there in the earth's environment, and like it is like we know it is even entered into the body form, and like we know the mineralogy of the iron is like it is majorly depending upon the oxides, and also how these oxides again forming as ores, and then what kind of the uh, environment which is suitable to form these iron ores or iron ore deposits, we will just look into. So just to go before to discuss about that, let us discuss this small diagram. This is actually EHPH diagram. So many of us know like iron was not formed before the oxidizing environment and all. So after when oxygen was available, that time only we were able to understand the formation of the iron ore. So this is the EHPH diagram in which here we can see the plus is like positive, shown like 0 to 14 scale. So we all know that 7 is a neutral. So even the fresh water and suitable water for drinking, everything is like pH should be 7. So the EH, it is from 0 to positive side, it is oxidizing acidic environment of 0 to 7 pH, and EH is positive in condition, and then pH 7 to 14 will be your oxidizing alkaline conditions. And at the same time, EH in negative environment, and then pH that is 0 to 7 will be your reducing acidic, and then your reducing alkaline will be from pH 7 to 14. So what will happen is like during this time of like the mobility of the elements will be affected.
So if you see, look into this, the mobile mobility of the elements, that is especially iron and Mn, will be like in reducing conditions, mobility will be more. But at the same time, if they are oxidizing and the pH will be less than 7 and all, like it will be like they are immobile. So when we look into this diagram, especially, please try to understand this diagram. Once if you can understand this diagram, it will be very easy for you all to think like where I can be getting iron and where I can be getting the manganese and all. So when we look into this diagram, especially diagram A, you can see like EH is given on y-axis and pH is given on x-axis. Like 0 to 14 is the scale for pH, and then 0 to 1 at the positive side, and 0 to minus 0.8 is the negative side of the EH. So when we see like there is a no limit for upper water stability, and there is a lower limit for water stability, because even the lower limit, if you come below than that lower stability, that means like the material won't be stable in that area, and again it will be forming, or it will interact, it will be reacting to form some another salts or another thing, because the elements won't be stable in that time. And even if you go upper limit also, because they will tend to form any other kind of salts with the inclusion of the other materials. But if you look into this diagram, in the diagram A, what we can see is like pH condition from 0 to 14. Okay, and you can see this line below than that, there is no formation of any kind of iron as well as manganese. But if you look into this small part, it is like pyrite, this portion. Yeah, this portion, it is forming pyrites. That means some sulfur configurations have come out, and below than this, that is like your, when your EH condition is negative, up to like -4 to -6 and all, and when your pH is more than 7 and all, it is tend to forming siderite. That is your carbonate ions. And if you further, like if you reduce your EH into further less, and if you increase your pH conditions, then what it is forming is like it is forming magnetite, that is with Fe3 or 4. But in all general conditions, when your pH is like normal condition and in positive side, and your pH is your EH is normal and 0 side and positive side, and your oxidizing what I need to say is like, yes, when it is in oxidizing acidic conditions and when it is in oxidizing alkaline conditions, and like it mostly forms hematite. And during yeah, hematites and all, and then when it is your pH is less than like 7 and all, it will be not interacting with the oxidation condition, then it will be only forming your Fe2 plus, and at no, when it is more of EH conditions, and it will be forming only Fe3 plus. At the same time, like you can also see like during the same conditions, you can also expect some manganese mineralization also over there, because again manganese is also a highly mobile element. So what it will happen is like wherever you're able to get some manganese mineralization, you can also think over like, okay, I can even get iron some other nearby places, because manganese is also your element which will again enter into the system immediately, and then iron enter into the system a bit late. So you can see over here like iron will be forming some Fe carbonates, and then sulfur rich irons and all, but here what we can see is directly manganese will be forming as CO3 and carbonates, and then uh, again, like let me tell you, everything is depending upon what type of environment you are providing. This is a typical lab conditions we can understand, one must understand, because in this particular diagram, all the conditions are lab conditions only, and this is the basic conditions like which we can study for to understand the formation of various minerals of iron related. So we can see like the particular phase diagram, the conditions are like temperature should be 25 degrees centigrade and total
pressure will be 1 bar, and then for the molarities of iron, sulfur, and carbonates are like 10 power minus 6, 10 power minus 6, and as well as 1. So like this, when we can understand how, if we can understand this diagram, especially, it will be very easy for to understand the formation of the iron ores upon the surface also. Yeah. So this is one more diagram which I wanted to show to you all, because in oxidizing conditions and all, along with the iron and manganese, what are the other elements which we can also look into? When we look this diagram, especially this portion, when our conditions, oxidized conditions, where Fe3 plus and Mn4 pluses are forming simultaneously, we can also look for some of the elements like thorium and yttrium, as well as some of the vanadium and uranium, and some of the elements like scandium, chromium, molybdenum, and copper, and then zinc, lead, all base metals we can also expect. So not only the iron and manganese, but you can also like expect some this kind of like lead and zinc and cobalt, and also we can expect in the same condition. So whenever you go for any like elements which we can expect, so you can definitely think about these all, and you can definitely answer the question. So now, like, we know the mineralogy and what are the each pH conditions that will help the minerals to form as ores and all. Like, what are the major types of these kind of formations? Like, there are two types majorly, like people identified in 1965. So one is like algoma type, and then the second is superior type of iron ore depositions. So algoma type is majorly associated, and the age difference is like for algoma type it is from 3.5 or 2, and then yeah, and it is majorly uh, associated with the volcanic, as well as for let me tell you the exact time span. Yeah, they have yeah. For BF depositions of algoma types, it is like 3.3 to 3.1, and they formed at least in two stages. That is, one is at during the age of 3.3 to 3.1, and then during the age of 2.8 to 2.7. Whereas superior type, that is mostly associated with the sediments like quartzites and dolomites and peltic rocks, and with showing much interaction of the volcanic association, whereas algoma type shows much interaction with the volcanic association. But superior type, it doesn't show much association with the volcanic center. But even the time span of the superior later depositions is also different. That is like it is 2.6 to 2.4 and 2.1 to 1.8. That's why I mentioned like all the deposits are formed below 1.8 GA period. And to keep all these into a single time span, it will be around like 1.5 below, above 1.5 only, like it was formed, and 90% of the deposits were formed during these periods only. So what are the classifications if you discuss again, like because there are nearly like some 6 classifications based upon the formation of this iron ores were divided. Then the classification, if we look into, like the first one is like banded iron formation of Precambrian age, as we already discussed. In which form we majorly get the banded irons, that is like banded hematite quartzite or banded magnetite quartzites, and because they generally form because of the chemical precipitation in the partially enclosed sedimentary environment. And the secondary is like your sedimentary iron ore deposits of siderite and limeritic compositions. So these are also known as like bog iron ore deposits. And then how these bog iron ore deposits will form? Because of the precipitation of the chemical uh, precipitation of the iron, because of the chemical acids and iron minerals,
are accumulated in regular bodies in stream beds and typically in the bottom levels of the box in these kind of depositions. And then laterite ores derived from the subaerial alterations, and general laterite ores are like formed because of the subaerial alteration of the rocks like gneisses and then cis and basic lava and humid tropical conditions. Because as we already discussed, in general conditions, I cannot interact with any of the air or water, but it needs under humid conditions, again, it will be forming some other components because it will be changing its 2 plus ions into 3 plus and it will enter into the system to form some alteration products. That's how like laterites derived from the subaerial alterations will be forming. Then fourth one is like your host from the magmatic activity. So this is a typical kind of activity which was discovered Singham provinces, and that is a zone of apatite magnetite rocks is found nearly associated with the copper belt in the Singham provinces. So based upon this, like this kind of classification has been taken. That is, and these are supposed to have been formed by magmatic activity accelerated with the Precambrian diasporic cycle. So it was also during the time of Precambrian only, and it is majorly with the interaction of the acid intermediate igneous rocks only. And the fifth one, it is titaniferous and vanadiferous magnetites. The titanium and vanadiferous, it is mostly associated with gabbro and ultra basic rocks. And then fault and fissure filling deposits, it was found near the Kadapa basin because fault filling deposit was found in Kadapa basin for several lengths of kilometers. That's why like this classification came into existence. These kind of fault and fissure filling deposits in this area was like it formed as like as a ridge and elevated from the ground and in a lens shape. So majorly, what are the states that are producing iron in our India is like mostly if they're from Jharkhand, Odisha, and then Chhattisgarh, some parts of Andhra Pradesh, and the majority are from Karnataka and as well as Goa. Also, it is there. And if you look into the international scenario, yeah, and international scenario, we can see like India, but this what to say, China, and then Russia, then Brazil, then Australia, and Ukraine, United States are the major countries that are producing. Even South Africa is also a part of majorly producing iron ore countries. And if you look into the productivity, like we can see like a million tons. In million tons, if you look like Australia is producing the mine production is the topmost will be is Australia, as well as even the reserves also like Australia is heading to the top position, and then Brazil and then China. India stands at the fourth position in mine production, but in the reserves, like India is standing at around seventh or eighth position with 5,500 million tons of reserves. So this is in a nutshell. This is the basic introduction about your like how what is the iron element and like how it is entered into the atmosphere and earth and like what is the mineralogy, and then how the CH conditions helps iron mineral formation, as well as like no in India like where and all we can get the iron depositions. And thank you, but let me discuss some brief methodology like when we go for any kind of exploration for iron and all, like what we do like when we are given any new virgin area, and like what kind of methodology, with what kind of methodology we go ahead for exploration and all, because the next lecture will be given by Dr. Arjit Barik sir.
in which he will be discussing with you all about when you are given a virgin area for exploration of iron ore, with the basic knowledge of iron and with the knowledge of the background information which you gathered from the available resources. So how will you approach in that area, and then what is your methodology of exploration, and how will you go for boreholes, and what is your strategy for borehole preparation, and how you will be like doing boreholes, and how you will be collecting all the samples. While collecting the samples, then what are the precautions you will be taking? And after collecting the samples, during the analysis of the samples, what kind of precautions you will take? And while calculating the resource, then what kind of measures you will be taking? What are the various stages in calculation of the resource? And like you will be listening in the next lecture session. So thank you all. And this is a brief introduction because we were asked to, I think, give a basic information because many of you may not be having much time. It seems like to take this training session after the afternoon session. That way we have to cut short this lecture. Otherwise, like any interactive session, this especially introduction and all, it would be very nice to interact with you all. Otherwise also it is okay. I'm very happy that you people chose this training program just to have brief look into, like, because once after you go out from the college, like it will be difficult for you all to again to come back and to sit and to listen. So I request you all please concentrate in the next lecture also, because that is a very important lecture in which you will be understanding many of the concepts even for your further studies as well as for your interviews which you are going to face in the next coming couple of years. So thank you all, and I request if you are having any queries and doubts, I think you are having our phone numbers. Please put it in the WhatsApp because it will be easy for us to communicate with you all personally. Definitely, we will be communicating with you all, and we will clarify your doubts. Thank you so much. Arjit? Arjit, are you there? So it's clear, this lecture was necessary for all the students to understand the behavior of iron. So I request the participants to come up and ask questions or queries whatever you have, so clear doubts. So I request participants to interact with sir. Dhaman Singh. Okay, I think there is no question, sir. Okay. Okay, Arjit, best of luck. Okay, Thank you for giving me this opportunity, and thank you all the students for okay, patiently listening to me. okay. I So request you all with give me this 2-3 minutes so basic that I knowledge. can. I think when you go back and when you search even the Google also, you will get all this information. Please study, and if at all if you find any difficult, please let us know. And I think there is a question from Naresh. Definitely, Naresh, I'll come back to One you. question, sir. One question from Chakali Naresh. Yeah, I could see that question. Naresh, I'll come back to you. I'll come back to you. Please concentrate in the next lecture session. I will give you the answer in the WhatsApp. Thank you. And it will be posted even to all the people. Thank you. Thank you, Arjit. Thank you so much. So we can have like participants be connected. So let me load the presentation. So give me some time, like 2-3 minutes, so that I can start the lecture session.
one. Yeah. Okay. Good morning, all of you. So, am I audible? Yeah. Yes, sir. You are audible. Please continue. Okay, sir. So, thank you, sir. Uh, okay. Once again, good morning to all of you. So, I think from the first lecture session, you could know how the element iron it behaves and get deposited. So after that, so during this lecture session, we'll talking about how we approach for exploration as well as and what are the activities we do during exploration. So under this lecture session, we'll be talking about exploration methodology, then stages of exploration, borehole planning, and resource estimation. So as a whole, this is a very big topic, and to complete within a limited time, it's very difficult. So, but I will try to give you the insight, like what is done actually. So with that, like if you have a further doubt and if you would like to know further, so that also we can discuss because we have a and we'll give contact number also. So with this, let us start. So first, we should know what is mineral exploration. Iron. So today we'll be discussing about iron only. And so sir told how it is getting deposited or what the types of deposits and basically what type of deposit we are getting in India. So like sir told, basically we get algoma type. So now the question is, what is mineral exploration? So literally, this is the process of finding ores to mine. That means you are getting a ore, and after that, you are taking that one up to mining stage. That is mineral exploration, and it is an intensive, organized, and professional form of mineral prospecting. And though it frequently uses service of prospecting, the process of mineral exploration on a whole is much more involved. So you should know what is the difference between mineral prospecting and mineral exploration. Mineral prospecting is search of a mineral commodity. So simple search is called mineral prospecting. Okay, in between, request all the participants, if my voice is breaking or forward and so that I can take a proper discussion. Okay, so we should know so that a difference we should know. Then only we can go forward. So mineral prospecting is basically the search of a mineral commodity, and the particular commodity is called a prospect. So suppose I'm searching for iron, searching for mineral prospecting, and the iron here it is called the prospect. But so basically we are not searching that one, and we are doing much more than that one. Like after searching that one, we are finding what is the size, what is the volume, what is the grade, and whether it is feasible for mining or not, and what are the activities can be. Because our ultimate aim is for mining. So before mining, all the activities, details about that prospect. So that involves, that is called mineral prospect exploration. So that means prospecting is a part of mineral exploration. So, mineral exploration is a broad one. Within that, prospecting. And after that, we should know what is greenfield exploration and what is brownfield exploration. So basically, if an area is new, if it is a virgin area, it is a fully new area, and we are going for exploration. So that is my greenfield exploration. Okay, my voice is not clear. Okay. Is it clear now? So, okay, thank you. So greenfield exploration. So greenfield exploration means if it is a new area,
So it's a fully virgin area and you are going for exploration, that is greenfield exploration. That means you are starting from the basics means you are starting from the grassroots level. And where is brownfield exploration? It is if an area is near to a mine, a site to a mine, or site to already explored block or area. So that is my brownfield exploration. So basically, normally, like people ask what is greenfield and what is brownfield. Sometimes people tell like if in an area if geological activity is not done, then that is greenfield exploration. And if is already greenfield geological activity is done, then that is brownfield. But that is not true. The exact definition is exploration term. You need to use the exploration time. If an area exploration is has not been done, then that is called greenfield. So your mineral exploration term should come because it is related to mineral exploration only. So then what is the objective of mineral exploration? Then why you are carrying out mineral exploration? So that we should know. Without any objective, we cannot go further. Like if you do not know what you need, then what activity you will do. So you need to know what are the objectives. The first one is the establishing the background condition, then finding alteration zones, finding the ore body, then determine whether the ore can be mined, and the ore can whether the ore whatever you are mining that is process that can be processed or not. If that is not processed, then what is the use of mining? Then determining the ore reserve or resource rather, resource as well as reserve. Then look at the area of infrastructure and operation. So if you do not have any infrastructure for operation, that means you cannot do it, cannot do mining profitably. So that will also become a problem. Then environmental assessment, further understanding of the mineral deposit, and refine the exploration models. So these things are we should keep all these things in our mind, and after that we should go for exploration. Then how we do means what are the steps to for exploration. So first, what we look for the background information. So if we have background information like geological, geophysical, and geochemical knowledge, so on the basis of that only we can go forward. Because where we'll do if you do not know the area or the background, so you cannot go forward. So you should know the background of the background, basically background geoscience of the area. Then after that, if you are getting some signatures, then you select the area. So that area will be selected. Then collected interpretation regional data. So whatever previous data you have, that you need to collect. They can local target area. Then again you have to refine the target. Like you cannot, like if it is a big area, so you all over the places you cannot do exploration. So you need a small area. Then field reconnaissance. I mean, what are the field signatures? So you need to go to field and see what signatures you are getting. So if field signatures you are not getting, then so you cannot again refine your area. Then drilling, suppose some signatures you are getting and you are expecting some of the mineral commodity down below. So then okay. So then sometimes what we do, we go for reconnaissance drilling, means one or two drilling. So if in that drilling positive like signatures are coming, then we go for detailed drilling. Then detailed drilling, then ore discovery, then resource estimation. So this is the like a broad step exploration. Then methodology. Then how means what are the methods or how we select a site or where we will go, do exploration. So that we do not know. Suppose it's a virgin area, it's a new completely new area. So on the basis of what I will go forward. So for that, what we do, we go for remote sensing, then geophysical signatures, then geological mapping. From geological map also you can get many things.
Then geochemical mapping, geochemical signatures also we get. So with these techniques, we select our area, like where we are getting signatures. Then with the help of remote sensing, what are the advantages of remote sensing? With the help of remote sensing, what we can do? So normally with the remote sensing data, so we can see a very big area, means big picture we can see. It's like a hawkeye. Then continuously you can accuse data, then provide up-to-date information because of capability of regular revisit. Then provide a cost-effective and map accurate data. Because if you are unable to go to the field, so directly from the lab, you can see the area, like signatures you can see. So that will be cost effective. Then provides large archive of historical data, and enable us to combine satellite data with other digital data. So if you have for a same area, you have a satellite data and other digital data, so that also see what are the signatures coming. Then good spectral and spatial resolution. So during this remote sensing also, you can get like the spectral as well as spatial resolution you can get better. Then using remote sensing, what you can do structural mapping, lithological mapping, and alteration mapping. All these things are required for mineral excellence, because as you know, structural mapping is very much required in mineral exploration, because many minerals, they are structurally controlled. So you need to have a structural map. Then a lithology, as all of you know that mineral means lithology. So within that lithology only you will get minerals. So कुछ मतलब कुछ अगर कुछ स्पेस जगह नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ दुकान जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ सामान कहाँ पे रहेगा, उसके लिए तो कुछ रहने का जगह चाहिए ना, या तो घर में कुछ सामान है तो रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, उसी के हिसाब से कुछ रहने का जगह चाहिए, तभी आप कुछ रख पाएंगे। जैसे कि मिनरल हो गया, उसके लिए तो कुछ जगह चाहिए, किसके अंदर रहेगा, वो तो लिथोलॉजी के अंदर रहेगा, पर्टिकुलर लिथोलॉजी के अंदर। सो फॉर दैट lithological mapping is very much important, because many of the minerals they like they deposited a particular rock type. Okay, so if you are mapping the lithology, then you can have a detailed idea. So what the mineral commodity uh, um, uh, can be visualized. Then alteration mapping. Alteration mapping means suppose we will take iron as an example. So iron is oxide. So वो तो alter होता है, alter होके different signatures देता है. So those signatures can be picked up. So alteration mapping होने से भी with the help of remote sensing we do alteration mapping. And alteration mapping के हिसाब से हम लोग mineral commodity को भी target कर पाएंगे. Then this is one example, like how alteration mapping is done, and how from this how they are getting signatures. So I'm not going into detail, because this remote sensing is a different chapter topic, and it itself is a like one semester course. So it's very difficult to, but you just keep in your mind that with the help of remote sensing, we can narrow down our study area, like where signatures are coming. So that means signatures you can get from this remote sensing data. So if you are getting signatures, then you can go for the exploration, go for further exploration. The next one is geophysical signatures. Like in geophysics, what we do, uh, we map the physical properties of the rocks. For example, gravity, magnetic susceptibility, magnetic gravity, magnetic and conductivity. So many physical properties are there. So by mapping the physical property, or by seeing the physical property, we can have some idea like what the rock types is down below.
So in case of, for example, in case of iron, what are the major contrasting physical property they have? They are gravity. Okay, because gravity, the weight is more, and magnetic, because mainly you know that iron and as well as magnetite, they are magnetic. So magnetic with in comparison to the like host rock, so magnetic variation will be more. So magnetic anomaly you can get here, as well as conductivity. So iron, they are good conductors, so conductivity will get better. So that signature also you can get. So if you map those things, so that means directly you cannot tell like iron is there, but from the properties, like these are the properties, and which rock type or mineral commodity can have this type of properties, then you can narrow down your thinking, like no, it can be iron. And moreover, iron normally deposited in a vast area, so in a big area. So in a regional area, if your magnetic conductivity as well as gravity data is high, so that means you can narrow down area, like you can think of about iron. So these are some of the photos just to show what are the gravity signatures. So I'll be sharing this presentation so you can see how the gravity signature is varying all over the India. Then gravity data of this southern part of our country, you can see how these are varying. Already this unit is given. So from this you can see geological map is given as well as gravity image data is given. So you can compare and see which part is low, which part is high. And this is a magnetic data, and this is for heat flow data for all over the India. And can you see here the right side? You can see the heat flow map of the India. You can see in the central part. It is in northeast east direction. You can see a high heat flow pattern is there, as well as it is getting down. So that heat flow pattern. So that at the center, that is called Sonata, So Narmada Tapti, that lineament. So there, as all of you know that in future what will happen, like after say 100, 200, 300 million years. So what will happen, we do not know, but we are getting high heat flow there. So we may get like a ripped in future. So next is geological mapping. So little bit we will discuss more about geological mapping here. Then before going to geological mapping, we should know what is a map. So a map is a representation of the Earth's surface drawn on a flat surface. The symbols and colors are used to represent the features of an area. So that means, this means, so you are representing 3D in a 2D. Because our surface is 3D, Earth's surface is 3D, and you are presenting in a 2D. A map is a 2D. Okay, so basically third way x, y, z. X, y, z in Earth surface means x, y, they are lat launch. Okay, and the z is elevation. In case of a physiographic, in case of physiography of the Earth surface, and those are represented in a contour lines. Okay, so in a toposit, the third dimension is represented by contour lines. Contour lines means the line joining equal elevation. This is for physiographic, means physiographic contour lines. But normally, by definition, contour lines means line joining equal values. So in case of toposit, that means the physiography, it is the line joining equal elevation. So the third dimension is represented by contour lines. Okay, so in geology, we do not have any contour line, because we have, and we do not have any contour line, rather we have different lithology. Okay, so xy is area, like lat and launch, and the third dimension is our geology.
So geology, how to represent those? So we represent the geology with the help of symbols and colors. And most maps will include the following features to interpret what represented on a map, like title, region, scale, direction, etc. And now coming to the geological mapping, the transferring of geological features on Earth surface, that means 3D, to a 2D map is known as geological mapping. So it needs planning, adequate base maps, field equipments, field work with safety measures, lab inputs, and finally preparation of a geological map. And through this process, we prepare a geological map. And the process of extracting meaningful information from the map is called map reading. क्योंकि हम लोग बीच बीच में बोलते हैं ना मैप रीडिंग हुआ क्या, मैप रीडिंग करते हैं क्या. सो मैप रीडिंग किया क्या. सो मैप रीडिंग मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलता है वो मैप से. So if you are getting some information from the map, so that is called map reading. Then these three questions, like you need to understand or you need to answer yourself, then only you can go forward. Like I'll be discussing about these three questions, like why we are mapping, what we are mapping, and what scale we are mapping. So if you ये हम लोग को अगर पता नहीं है मैं क्या मैप कर रहा हूँ, किस लिए मैप कर रहा हूँ, कौन सा स्केल में मैप कर रहा हूँ, ये सब मुझे अगर बिल्कुल पता नहीं है तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा. मेरा मैपिंग का पूरा प्रोसीजर गलत हो जाएगा. व्हाई वी आर मैपिंग, मैं क्यों मैप कर रहा हूँ, दैट आई शुड नो फर्स्ट. मैं मैपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव. मैं क्यों मैप कर रहा हूँ, या तो मुझे आयरन मिलने के लिए मैं मैप कर रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर मिनरल के लिए मैप कर रहा हूँ, या मुझे ये एरिया में जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैप कर रहा हूँ, या मुझे ये एरिया पूरा न्यू है, मुझे इसका जियोलॉजिकल मैप बनाना है, उसके लिए मैं मैपिंग कर रहा हूँ, या तो मुझे गोल्ड का कहीं पे गोल्ड यहाँ पे सिग्नेचर्स है, मैं गोल्ड कहाँ पे ज्यादा मिलेगा उसके लिए भी मैप कर रहा हूँ. सो ये सब क्वेश्चंस मुझे पहले से ही अंडरस्टैंड करना है. मुझे समझना है कि ये सब क्वेश्चंस, ये अगर मैं समझ गया तो मैं नेक्स्ट प्लान कर सकता हूँ. सो दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट इज व्हाट वी आर मैपिंग. क्योंकि अगर आप गोल्ड के लिए जैसा मैपिंग होता है, आयरन के लिए वैसा मैपिंग नहीं होता, एंड आपको कुछ रॉक टाइप या पर्टिकुलर जियोलॉजिकल मैप बनाना है तो उसके लिए भी मैपिंग नहीं अलग होता है. क्योंकि गोल्ड कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है, वहां पे आयरन देखिए पूरा हर जगह पे मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिल जाता है, एक ब्रॉड डिपॉजिट होता है. गोल्ड कहीं कहीं पे छोटा छोटा डिपॉजिट या तो छोटा छोटा सिग्नेचर्स मिलता है. और जियोलॉजिकल मैप अगर करना है वो तो पूरा अलग है. सो इफ आई एम कमिंग टू नो व्हाट आई एम मैपिंग, देन क्या होता है ना, मेरा प्लानिंग उसी के हिसाब से चेंज होता है. नहीं तो मैं जितना भी अगर आयरन के लिए आयरन का प्लानिंग जो है अगर मैं गोल्ड पे लगाऊंगा तो मेरा वेस्टेज जाएगा, और गोल्ड का प्लानिंग अगर आयरन में लगाऊंगा वो भी बेकार का वेस्टेज जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा. देन द थर्ड इज एट व्हाट स्केल वी आर मैपिंग. ये मेनली डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है. सो जियोलॉजिकल मैपिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट स्केल में होता है. तो ये अगेन डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा मैं लिथोलॉजी मैप कर रहा हूँ, या आयरन मैप कर रहा हूँ, या गोल्ड मैप कर रहा हूँ, या यूरेनियम मैप कर रहा हूँ. क्योंकि आयरन बहुत ही ज़्यादा बड़ा जगह में मिलता है तो उसके लिए स्केल थोड़ा बड़ा करने से चलेगा. लेकिन एट द सेम टाइम गोल्ड के लिए अगर मैं स्केल बड़ा कर दूंगा तो अगेन मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आई विल मिस ऑल द सिग्नेचर्स. सो स्केल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्केल के हिसाब से मेरा प्लानिंग चेंज होगा. सो लार्ज स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. लार्ज स्केल मीन्स आपका बहुत ही छोटा एरिया होगा, और स्मॉल स्केल मीन्स बड़ा एरिया होगा. सो बड़ा एरिया में मैं ट्रैवर्स लूंगा या जैसे भी प्लान करूंगा, सैंपल करूंगा, या तो कुछ लिथोलॉजी देखूंगा, उसको प्लॉटिंग करूंगा. छोटा एरिया में वो नहीं होगा. छोटा एरिया में ट्रैवर्स लाइन बहुत ही पास पास होगा, सैंपल बहुत ही पास पास हम लोग लेंगे, तो हम लोग का प्लानिंग पूरा अलग हो जाता है. एंड
और एक चीज होता है, यहाँ पे स्केल के बारे में बातचीत हो रहा है तो मैं स्केल के बारे में थोड़ा कुछ बोल देता हूँ। एक टोपोसिट जो होता है 1:50,000 स्केल में होता है। टोपोसिट इज 1:50,000 स्केल। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज दैट स्केल? स्केल का मतलब क्या होता है, हम लोग स्केल क्यों देते हैं? दैट मीन्स आपका एक यूनिट जो मैप में है 50,000 टाइम्स इन फील्ड, सो 1:50,000। फॉर एग्जाम्पल इन ए टोपोसिट क्या होता है 1:50,000 स्केल। तो उसमें हम लोग का मैप में अगर 1 सेंटीमीटर हुआ, ओके, 1 सेंटीमीटर इन ए मैप इक्विवेलेंट टू 500 मीटर्स इन फील्ड। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर एक टोपोसिट में कहीं अगर 1 सेंटीमीटर आपको एक रॉक टाइप देखे, ओके, 1 सेंटीमीटर का रॉक टाइप अगर आप टोपोसिट में देखते हैं तो दैट मीन्स फील्ड में कितना होगा 500 मीटर्स। और फील्ड में अगर आप 50 मीटर्स का एक रॉक टाइप देखें, आप वहां पे मैप में कितना आप होगा 1 mm। सो मैप में हम लोग जो मैपिंग करते हैं तो 1 mm से तो छोटा हम लोग मार्क ही नहीं कर पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। मैं अगर फील्ड जा रहा हूं, मुझे एक किम्बरलाइट डाइक मिला, ओके, मुझे किम्बरलाइट मिला या तो एक डोलेराइट डाइक मिला, डोलेराइट डाइक मिला जिसका विड्थ है 50 मीटर्स। अगर 50 मीटर्स है तो मेरा बस मैप में जब हम लोग का उसको लगाएंगे तो वो एक ही 1 mm का लाइन होगा। अगर मेरा डाइक एक 30 मीटर्स का होता है तो उसको तो मैं प्लॉट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा छोटा हो जा रहा है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो इसीलिए बोल रहा हूं वाई स्केल्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब होता है मैं मुझे अगर कुछ कुछ कमोडिटी या रॉक टाइप, कुछ रॉक टाइप या कुछ मिनरल जो छोटा एरिया में मिलता है, तो उसके लिए मेरा स्केल चेंज हो जाएगा। मैं अलग स्केल में उसको मैपिंग करूंगा या तो एक्सप्लोरेशन करूंगा। सो इसीलिए दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन these are the types of geological map on the basis of scale. जियोलॉजिकल रिकॉग्नाइजेशन मैप, तो ये हो गया आपका 2,50,000 स्केल में, 1:2,50,000। रीजनल जियोलॉजिकल मैप 1:50,000 में है, 1:25,000 में है, एंड इवन अप टू 1:10,000 स्केल ऑन SY टोपोसिट, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसिट। देन डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप larger than 1:10,000. Then specialized map 1:1,000 or even 1:500 scale for economic purposes like mine plan, drill hole plan, and for mineral investigation, engineering purpose, and many things. So normally जो जियोलॉजिकल मैपिंग हम लोग करते हैं, so वो कौन सा स्टेजेस में होता है, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग। सो जियोलॉजिकल मैपिंग का स्टेजेस क्या होता है? फर्स्ट होता है प्री फील्ड वर्क, देन फील्ड वर्क, देन पोस्ट फील्ड वर्क, then laboratory studies, after that interpretation, and then preparation of the map, final map and report. So ये stages रहता है हम लोग का geological mapping का। So now we will discuss about pre-field work. So pre-field work में हम लोग क्या करते हैं? So what are the activities we do normally during pre-field work? So those are collection of base map और topocid. तो यहाँ पे base map और topocid, सपोज आप कहीं एक जगह जा रहे हैं जो कि पूरा नया जगह है और वो उस एरिया के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, जियोलॉजिकल चीजें कुछ भी पता नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका बेस मैप क्या होगा? टोपोसिट होगा। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, उसको तो मार्क करना है ना। दैट मीन्स आपका लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्राइमरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोकेशन। आप रॉक टाइप बोलिए, कुछ भी बोलिए, विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन ही हम लोग बोलते हैं। तो लोकेशन आपको पता नहीं है तो सारा ब्लंडर हो गया। तो लोकेशन हम लोग को कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो मैप होना चाहिए। तो लोकेशन मैप कौन सा है? बेसिकली टोपोसिट। सो टोपोसिट के हिसाब से हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। सो एक नया एरिया के लिए टोपोसिट यूज करते हैं। और अगर
इनकेस ऑलरेडी एक एक्सप्लोर हो चुका है एरिया और पूरा जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो चुका है, उसके लिए बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगेन मैं जा रहा हूँ वहां पे कुछ काम करने के लिए, तो प्रीवियस जियोलॉजिकल मैप अगर होगा उसको भी मैं बेस मैप बना सकता हूँ। सो पहले उसका एक जियोलॉजिकल बेस मैप बन जाएगा। सो प्रीवियस जियोलॉजिकल बेस मैप को लेके उसमें अगर मैं खुद को लोकेट कर पाया और आगे काम बढ़ा पाया, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, बिकॉज आपको प्रीवियस जियोलॉजिकल नॉलेज भी आ जाएगा उसको देख के। So for this, we collect base map or toposit. Then consultation of literature and previous reports. So अगर कुछ एरिया में कुछ काम हुआ है पहले से ही, या तो अगर पूरा नया एरिया है तो नियर बाय एरिया का भी हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं, क्योंकि नियर बाय एरिया में जियोलॉजी क्या है वो भी देखते हैं, कौन सा डोमेन है, क्या लिथोलॉजी है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन भी देखते हैं, स्ट्राइक लेंथ, स्ट्राइक डीप, ये सब देख के हम लोग देख सकते हैं कि ये नया एरिया में उसका एक्सटेंशन है कि नहीं। तो नेबरिंग एरिया के लिए भी हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, और अगर काम हो चुका है उसके साथ प्रीवियस रिपोर्ट भी उस एरिया का पढ़ लेते हैं। सो दैट क्या होता है ना कि आपको पूरा क्लियर पिक्चर आइडिया आ जाएगा कि ये एरिया क्या है और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है ना कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन लेके आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड थीमेटिक मैप्स एंड कंसल्टेशन ऑफ डिफरेंट मैप्स। सो थीमेटिक मैप्स होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ये मैप्स होता है डिफरेंट थीम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज मैप, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप, land use land sorry land use and land use map। ओके, सो ये सब मैप को हम लोग पढ़ते हैं, सो दैट ड्रेनेज मैप के हिसाब से हम लोग को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि किस टाइप का ड्रेनेज है। सपोज एक डेंडिटिक, आपको आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, डेंडिटिक ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल, रेडियल, ट्रेलिस, पैरेलल, ये सब क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो लिथोलॉजी है पर्टिकुलर टिपिकली वही दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे मिलता है हम लोग को, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म लिथोलॉजी होगा, दैट में फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। सो बेसिकली ग्रेनाइट के ऊपर हम लोग को डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न मिलता है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे मिलता है, सपोज जहाँ पे एक सेडिमेंटरी डिपिंग सेडिमेंटरी स्ट्रेटा होगा, सो पूरा कुछ डिपिंग सेडिमेंट्स है, तो उसमें उसका स्लोप में पूरा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न मिल जाएगा। ट्रेलिस कहाँ पे मिलता है, ट्रेलिस मिलता है हम लोग का जॉइंटेड रॉक होगा, जॉइंटेड अगर हो जाता है तो वहां पे मिलता है, या तो एक फोल्डेड एरिया में भी मिल जाता है, ठीक है। एंड आपका रेडियल होगा, रेडियल होता है तो दैट मींस इट्स अ कोन, वोल्केनिक कोन टाइप और डोम होता हो सकता है। सो उसके बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ चीजें, हम लोग को सिग्नेचर्स मिल जाता है कि हम लोग का मन में क्या कुछ कुछ सिग्नेचर्स आना है, हाँ ये हो सकता है। हम लोग तो जाके फील्ड में उसको क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन एरियल सर्वे यूजिंग सैटेलाइट डेटा। तो सैटेलाइट डेटा के हिसाब से हम लोग को बहुत स्ट्रक्चरल डेटा भी मिल जाता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एज वेल एज लिथोलॉजी भी मिल जाता है, क्योंकि डिफरेंट लिथोलॉजी दे गिव डिफरेंट सिग्नेचर्स। सो एरियल सर्वे अगर मैं यूजिंग सैटेलाइट डेटा कर देता हूँ, वहां पे मुझे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देन कंसल्टेशन ऑफ जियोफिजिकल डेटा इफ अवेलेबल। एक एरिया में अगर ऑलरेडी जियोफिजिकल मैपिंग हो चुका है या जियोफिजिकल सिग्नेचर्स एक्वायर्ड हो चुका है, तो उसको लेने से भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। देन प्लानिंग फॉर ट्रैवर्स लाइन एंड प्रपोज सैंपल लोकेशन पॉइंट्स। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बेस मैप मेरा है या तो टोपोसिट है, तो टोपोसिट के हिसाब से मैं ट्रैवर्स प्लान करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे ट्रैवर्स लेना है टू क्रॉस चेक द लिथोलॉजी and to get more information about structure as well as mineralization। एंड खाली तो ट्रैवर्स नहीं लेंगे, हम लोग को सैंपल भी कुछ अगर कलेक्ट करना है, लाइक कितना ग्रेड है, क्या है उसका ग्रेड, खाली कहाँ कहाँ पे कितना ग्रेड है वो भी तो हम लोग को पता चलना है, या तो कहीं अगर रॉक टाइप मुझे पता नहीं है उसके लिए भी सैंपल लेना है। तो कहाँ कहाँ क्या लेना है
अगर पहले से ही मैं प्री डिटर्मिंड हो जाता हूँ तो दैट विल बी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग फील्ड वर्क। अदरवाइज फील्ड में जाके मैं पागल जैसा घूमता रहूंगा, कहाँ पे सैंपल लेना है, क्या करना है, कहाँ पे घूमना है, कौन सा लिथोलॉजी देखना है, तो ये प्रॉब्लम से रहता है। तो इसीलिए अगर प्री प्लान आप पहले से ही होके उसके बाद फील्ड जाते हैं तो आपका क्या होता है ना, आप एक पोलराइज हो जाता है, आपका माइंड पोलराइज हो जाता है और आप एक ही डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। Then these are the field equipments which we normally take to field. The first is base map or working sheet like topo sheet, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं। Then diagonal scale, diagonal scale इसमें क्या होता है कि आपका scale and protector, जो आपका प्रोटेक्टर वगैरह रहता है, उन दोनों का काम एक ही में हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर अगर प्रोटेक्टर भी लेंगे, स्केल भी लेंगे, सब कुछ लेंगे तो आपको 2 हाथ की जगह 4 हाथ लेने पड़ेगा। तो इसीलिए डायगोनल स्केल वहाँ पे बहुत ही यूजफुल होता है। देन ब्रंटन कंपास एंड जियोलॉजिकल हैमर, देन हैंड लेंस, पॉकेट नाइफ, then streak plate to get the streak of the minerals, then hardness plate, then chisel, pocket magnet. We take pocket magnet, why? To take whether it is magnetic or not. Then sample bags and a bottle of HCl. HCl क्यों? Because it's in some places कार्बोनेट रॉक को हम लोग को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप अगर नॉर्मल लाइमस्टोन देते हैं दैट इज फाइन, बट इफ इट इज मेटामॉर्फोस्ड डिफॉर्म्ड तो वहाँ पे कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक रॉक टाइप है कैल्क ग्रेनुलाइट, कैल्क ग्रेनुलाइट, तो उसको तो आप उसमें वो कैल्साइट देखेंगे ना, उसको आपको फेल्सवार जैसा दिखेगा, तो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इफ इट इज डिफॉर्म्ड अगेन, माइलिनेटाइज्ड और डिफॉर्म्ड, वहां पे भी आपको कैल्साइट का पूरा क्लीवेज या तो जो भी है वो नहीं दिखेगा। तो वो कंडीशन में भी कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए HCl नॉर्मली वी टेक। देन कैमरा चाहिए, कैमरा व्हाट एवर द सिग्नेचर्स यू आर गेटिंग, क्या और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलता है तो उसको कैमरा में हम लोग कैप्चर करते हैं, सो दैट हम लोग फ्यूचर में उसको रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंड मोर ओवर आपको बेसिकली क्या होता है ना, जो भी काम करते हैं उसका प्रूफ भी चाहिए, ये रॉक टाइप था, ये स्ट्रक्चर था, जो भी था। विदाउट प्रूफ यू कैनॉट गो फर्दर। एंड कैमरा जब भी आप फोटो लेते हैं उसके साइड में हम लोग कुछ ना कुछ कभी कभी एक देखे होंगे कि पेपर रख देते हैं, या सॉरी पेन रख देते हैं, एक स्टैम्प रख देते हैं, या तो एक हैमर रख देते हैं। सो दोज आर वी कीप फॉर स्केल, ताकि आपको पता चले कल आग आप अगर 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद देखेंगे या 1 साल के बाद देखेंगे कि ये कितना बड़ा था, ये पर्टिकुलर एक मिनरल या फोल्ड था, फोल्ड के पास में अगर आप स्केल रख देते हैं तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा था। नहीं तो खाली फोटो देखने से पता नहीं चलेगा छोटा बड़ा है या क्या है। देन फील्ड नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, ग्राफ, ट्रेसिंग शीट, रॉक सैंपल मार्किंग एंड मेजरिंग टेप। सो दीज थिंग्स नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक बैग में डालते हैं, लेके चलते हैं। देन वी गो फॉर फील्ड वर्क। फील्ड वर्क सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि लोकेशन। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विदाउट लोकेशन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोकेशन में आप अगर हैं तभी आप कुछ प्लॉट कर पाएंगे, नहीं तो आपका बेसमेंट में कहाँ प्लॉट करेंगे, मैं कहाँ पे ये वाला पत्थर देखा था, या तो मुझे डायमंड मिला था, कहाँ मिला था वो पता नहीं चलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन। देन अगर लोकेशन आपको पता चल गया, देन यू नीड टू स्टडी द जियोमॉर्फिक फीचर्स, क्योंकि जियोमॉर्फिक फीचर्स के हिसाब से आपका लिथोलॉजी के हिसाब से जियोमॉर्फिक फीचर्स वैरी करता है। ड्रेनेज पैटर्न इज आल्सो जियोमॉर्फिक फीचर। देन कभी कभी क्या होता है ना कि शार्प एक नाला भी बन जाता है, एक शार्प नाला या शार्प रिवर, स्ट्रेट रिवर रादर, तो वो भी क्या होता है ना, स्ट्रक्चरली कंट्रोल होता है। तो बहुत सारा जियोमेट्रिक फीचर्स है जो आप देख के आपको डाउट कर सकते हैं कि ओके ये रॉक टाइप हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर बन सकता है। देन फाइंडिंग एंड स्टडी द एक्सपोजर, वहां पे आप तो लोकेशन मिल गया, जियोमेट्रिक फीचर स्टडी कर लिए, आपको वहां पे पत्थर देखना है। कुछ अगर नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो क्या आप
आप जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है ना कि हम लोग एक्सपोजर स्टडी करते हैं, रॉक एक्सपोजर स्टडी करते हैं, या तो रॉक से पहले सर्च करते हैं उसके बाद स्टडी करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सपोजर आपको नहीं मिलता तो आपका कुछ भी इतना वैल्यू नहीं होता, अगर इनकेस एक्सपोजर एक एक लोकेशन में नहीं मिलता। बट जियोमॉर्फिक फीचर्स या तो फिजियोग्राफी देख के आप कुछ भी अगर डाउट है मन में उसको भी नोटिंग करके आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मुझे डेंटिक ड्रेनेज पैटर्न मिला, रॉक टाइप ये हो सकता है, या तो यहाँ पे एक स्ट्रेट नाला मिला या स्ट्रेट रिवर मिला, सो दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड हो सकता है, इट मीन्स ये फॉल्ट भी हो सकता है। सो ये सब चीजें आप नोट करके ला सकते हैं। देन आपको अगर एक्सपोजर मिल गया, देन आपको ये देखना है दैट एक्सपोजर, whether that exposure is drifted or in situ, मतलब जैसे पहले से ही वैसा है या वो घूम गया है या तो ड्रिफ्ट हो गया है। सो दैट यू हैव टू सी। सो आप अगर घूम गया होगा या तो इधर उधर हो गया होगा, टिल्टेड हो गया होगा, वहां पे आप कुछ भी स्ट्रक्चरल डेटा लेंगे, बेड का एटीट्यूड स्ट्राइक लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आपको वो देखना है ये इनसितु है कि नहीं। तो अगर इनसितु आपको पता चल गया, हाँ ये क्लैरिफाई हो गया कि इनसितु है, देन आपको देखना है कि व्हाट आर द मिनरोलॉजी एंड टेक्सचर। हैंड स्पेसिमेन स्टडी हम लोग देखते हैं। हैंड स्पेसिमेन स्टडी करके हम लोग को क्या पता चलता है कि व्हाट इज द लिथोलॉजी। और अगर लिथोलॉजी ठीक है तो रॉक टाइप क्या होता है हम लोग देखते हैं। रॉक टाइप के साथ हम लोग और भी देखते हैं, अगर कुछ इसके साथ मिनरल मिनरल कुछ एसोसिएट है कि नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। देन अगर क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद एटीट्यूड ऑफ बेड्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, तो आपका बेड का एटीट्यूड स्ट्राइक डिप ले लेते हैं। जॉइंट्स, फोलिएशन, लिनिएशन, ये सब का डिटेल्स ले लेते हैं, जो भी वट एवर अवेलेबल सब कुछ हम लोग ले लेते हैं। देन उसको क्या करते हैं ना कि बेस में हमें प्लॉट करते हैं, खाली लिखने से नहीं होगा, उसको हम लोग रफली प्लॉट भी कर देते हैं। फाइनल तो हम लोग आके बाद में कैम्प में करते हैं, बट वहां पे एटलीस्ट रफली प्लॉट कर देते हैं। देन आपका ट्रेसिंग द लिथोलॉजी, लिथोलॉजी बाउंड्री भी मार्क करना है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ग्रेनाइट है, वहां पे सैंडस्टोन है, वहां पे ये है, उसका तो बाउंड्री आपको देना है ना। तो ट्रेसिंग द लिथोलॉजी, लिथोलॉजी भी आपको ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा लिथोलॉजी है, तो लिथोलॉजिकल कॉन्टेक्ट पे। सो ये सब करने के बाद हम लोग कैंप आते हैं। कैंप आते हैं, कैंप आने के बाद सो बेसिकली प्रीफील्ड वर्क आपको बोल दिया। देन फील्ड वर्क क्या होता है, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मैप कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और जियोलॉजिकल फीचर्स जो भी ग्राउंड होता है उसको हम लोग मैप में प्लॉट करते हैं। देन पोस्ट फील्ड वर्क, पोस्ट फील्ड वर्क क्या होता है, हम लोग नॉर्मली हेडक्वार्टर या तो कैंप में आके करते हैं। जो भी हम लोग का डेटा है उसको सब हम लोग प्लॉट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद क्या होता है कि कुछ कुछ लैबोरेटरी स्टडीज भी होता है, कुछ कुछ चीजों का क्या होना है कि रॉक टाइप, सपोज एक आपको रॉक टाइप पता नहीं चला, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अगर उसमें भी पता नहीं चला तो हम लोग या तो ईपीए में या तो डिफरेंट केमिकल एनालिसिस के लिए भी भेजते हैं। और बहुत सारा सैंपल्स होता है जो हम लोग केमिकल एनालिसिस के लिए भी भेजते हैं, टू नो द मिनरल कंटेंट या जो भी है वो सब जानने के लिए। सो वो हो जाता है हमारा लैबोरेटरी स्टडीज। ओके, देन आफ्टर दैट ये सब मिलने के बाद वी गो फॉर इंटरप्रिटेशन। Interpretation and computation, synthesis and subsequent interpretation of data through application of modern techniques. So interpretation करने के बाद we go for final map and report. Then for example ये आपका एक रिपोर्ट यहाँ पे एक है, या इसका स्केल है 1:10,000। ओके, ये एक लार्ज स्केल मैपिंग का मैप है। तो ये सब काम करने के बाद ये रिपोर्ट फॉर्म में मुझे एक सॉरी इस टाइप का एक रिपोर्ट मुझे मिलता है, या तो जियोलॉजिकल मैप मिलता है। So you can see here different rock types with latitude and longitude, lat, longe and
different rock types. So the third dimension like geology is represented by different colors. Okay, so यहाँ पे आपको मेजर लिथोलॉजी वगैरह क्या है, BHJ, BSC, CHUT, banded hematite jasper, banded hematite CHUT, and CHUT. Then shale, okay, banded hematite shale, then manganese shale, then iron ore, then laterite or ferruginous laterite, then floater and soil. So इस टाइप का मेजर लिथोलॉजी मेरा यह है, ये है. तो सपोज मुझे उसके बाद ये वाला लिथोलॉजी मिल गया, तो मिलने के बाद तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयरन का पैच है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे बहुत सारा पैचेस है, आयरन का पैचेस है. तो ये मुझे अगर ये पैचेस अगर मिल जाता है तो व्हाट आई कैन डू, दैट मीन्स मेरा एरिया नैरो डाउन हो गया, मेरा एरिया सिलेक्शन हो गया. ये एक एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक एरिया है. सो ये एरिया को मैं फर्दर एक्सप्लोरेशन करूँगा. अदरवाइज नैरो डाउन नहीं होने से पूरा एरिया करता, पूरा एरिया करके मेरा क्या फायदा होता, क्योंकि बाकी जगह तो नहीं है. तो जियोलॉजिकल मैपिंग में ये सब रिकॉर्डेड हो गया एंड आई गो फॉर एक्सप्लोरेशन. ओके, सो ये होता है कि प्रोसीजर हाउ वी गो फर्दर. तो सपोज ये मेरा एरिया हो गया. सो ड्यूरिंग दिस मैपिंग आयरन के लिए हम लोग को सिग्नेचर क्या क्या मिलता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं. सो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं हार्ड लैमिनेटेड ओर है. देन यहाँ पे लैटेराइज्ड हार्ड लैमिनेटेड ओर, दैट मीन्स ये जो हार्ड लैमिनेटेड ओर है और ये लैटेराइज हो गया है, तो वो भी देख सकते हैं. एंड इन सम प्लेसेस आपको फेरुजिनस सॉइल मिलता है, आयरन रिच सॉइल. तो उसमें हम लोग उसके नीचे वेदर आयरन है कि नहीं कैसे करेंगे, तो हम लोग को पीट और ट्रेंच थोड़ा बहुत देखना पड़ता है. तो यहाँ पे आप नीचे वाला फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाला फोटो, यहाँ पे पिटिंग ऑलरेडी हो चुका है. अब ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी पिट हो चुका है. यहाँ पे वो पिटिंग के हिसाब से हम लोग नीचे देखते हैं. ऊपर तो हम लोग को फेरुजिनस सॉइल मिल रहा है, नीचे क्या है, कितना नीचे है, और अवेलेबल क्या है वो भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, देन आपको कभी कभी क्या होता है ना कि नाला सेक्शन होगा, या तो कहीं पे नाला कुछ पानी तो बहता होगा, नाला सेक्शन वगैरह, या तो कहीं पे कटिंग होगा. तो वो साइड्स पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइटराइट का एक्सपोजर भी मिलता है. ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर है, सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर है करके ये सब आता रहता है. ठीक है, ये आकाश कौन है, आकाश आकाश कौन है, आप मुझे लग रहा है आप हमेशा आपको पीछे से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. आकाश जी, आप पता नहीं आप कंसिडर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. ओके, ठीक है, जो भी. देन ये आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ एक्सपोजर ऑफ हार्ड लैमिनेटेड ओर कैन बी सीन इन ए फील्ड. सो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव गिवन ए स्केल इन द फॉर्म ऑफ ए हैमर. तो आपको हैमर का साइज से स्केल पता है और हैमर का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, सब कुछ पता है. तो आपको ये फोटोग्राफ क्या है ना, आपको बाद में देखने से भी पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एक्सपोजर था. देन ये एक फील्ड फोटोग्राफ है BHJ, बैंडेड हेमाटाइट जास्पर, और ये एक फील्ड फोटोग्राफ लैमिनेटेड आयरन ओर. और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ जगह पे क्या होता है ना, आपको एक्सपोजर बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, सर्फिशियल पूरा लैटराइटाइज हो जाता है. पूरा अगर लैटराइटाइज हो जाएगा, लैटराइट आप लैटराइट तो देखे होंगे, एंड दिस फोटोग्राफ इज फॉर फेरुजिनस लैटराइट. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कलर कैसे बनता है, एंड उसमें भी आयरन वाला भी आप देख सकते हैं कैसे सेकेंडरी एनरिचमेंट हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. सो दी ऑल दीज आर सिग्नेचर्स. ओके, सो मुझे ये पता चल गया आफ्टर फील्ड वर्क कि दीज आर द प्लेसेस वेयर वी आर गेटिंग आयरन ओर.
तो उसके बाद क्या है ना कि हम लोग पूरा इतना बड़ा एरिया को तो एक साथ में नहीं ले सकते, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग डिमार्क कर देते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स करने के बाद वो ब्लॉक को हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम लोग को रिसोर्स एस्टिमेशन जो होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है और ये एक थर्ड ब्लॉक है। तो डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। सपोज ये साल मैं ये 3 ब्लॉक लूंगा एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये वाला मैं डिमार्केट कर दिया और हम लोग ये वाला इस साल ये वाला करेंगे। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे भी हम लोग को मिल रहा है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हैं। ओके, तो उसी टाइप का हम लोग प्लान करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे तो मुझे ये ब्लॉक में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, यहाँ पे बोरल वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे अगर जियोलॉजिकल मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट वगैरह आ रहा है तो इसका स्ट्राइक कंटिन्यूटी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सॉइल है, तो ये सॉइल कवर है। लेकिन नीचे अगर हम लोग को बोरल डेटा में हम लोग को कुछ कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स इसका कंटिन्यूटी भी आएगा पक्का। तो ये करने के बाद जहां पे हम लोग का अवेलेबल डेटा है उसको एक्सप्लोर कर देंगे, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो उसका साइडवाइज भी जा सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी तो पक्का आएगा। ओके, तो उसी के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। देन नाउ विल गो टू एक्सप्लोरेशन स्टेजेस। So basically there are 4 exploration stages. The first one is recognition survey, then preliminary exploration and general exploration and detailed exploration. तो हम लोग उसका कैसे करते हैं, G1, G2, G3 and G4. G stands for geology. Okay, so this is the UNFC, United Nations Framework Classification for Resources. So we'll talk now, that is G4 stage. G4 स्टेज और रिकॉग्निशन सर्वे। सो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें हम लोग एरियल रिकॉग्नाइजेंस करते हैं। एरियल रिकॉग्नाइजेंस मतलब रिमोट सेंसिंग हो गया, या तो एयरबॉर्न जियोफिजिक्स। रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं एयरबॉर्न जियोफिजिक्स। एयरबॉर्न जियोफिजिक्स मतलब आपका विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट दे गेट द डेटा, लाइक ग्रेविटी डेटा दे टेक। तो पूरा एक बड़ा एरिया का वो मिल जाएगा। तो उसमें अगर हम लोग को कुछ सिग्नेचर्स आता है तो बढ़िया है। तो इसका मतलब होता है कि रिकॉग्निशन सर्वे G4 स्टेज जो करते हैं हम लोग एक बड़ा एरिया के लिए करते हैं। देन जियोलॉजिकल सर्वे मैपिंग कौन सा स्केल में होता है, 1:12,500 एंड 1:, और 1:10,000 स्केल। सो 12,000 and 12,000 means it's a big area. देन जियोकेमिकल सर्वे मतलब ग्राफ एंड चिप सैंपल। कहीं पे अगर मुझे मिनरलाइज जोन मिला या तो मैं कहीं देखा तो ग्राफ कर लेता हूँ, डायरेक्ट सैंपल ले लेता हूँ। दैट चिप सैंपलिंग दैट प्रोसीजर इज डिफरेंट। चिपिंग करते हैं, चिपिंग करके उसका सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसका ग्रेड निकालते हैं। देन जियोफिजिकल सर्वे, ग्राउंड जियोफिजिकल सर्वे अगर हो रहा है उसको भी करते हैं टू गेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। देन टेक्नोलॉजिकल लाइक पिटिंग ट्रेंचिंग भी करते हैं। जैसे कि आपको मैं बोला कि आप अगर फेरुजिनस सॉइल है कि आपका सॉइल में कहीं ना कहीं तो आयरन वाला होगा, इसीलिए फेरुजिनस बन गया। तो आयरन कहाँ पे होगा, सो उसको देखने के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। तो पिटिंग ट्रेंचिंग वगैरह करके उसको सिग्नेचर्स हम लोग नीचे देखते हैं। अगर पिटिंग ट्रेंचिंग में भी नहीं मिला, लेकिन लेकिन सोर्स तो है आयरन का, तो उसके लिए में क्या ना स्काउट ड्रिलिंग करते हैं। स्काउट ड्रिलिंग मतलब हैपाथेटली एक कहीं ना कहीं ड्रिलिंग मार देते हैं। ड्रिलिंग करके देखते हैं कि नीचे क्या है, तो उसमें भी हम लोग को पता चल जाए नीचे क्या है कि नहीं। देन सैम्पलिंग, और जो भी हम लोग सपोज स्काउट ड्रिलिंग करने के बाद कुछ हम लोग को मिला, वो मटेरियल का ग्रेड क्या है उसको भी हम लोग पता करना है। ऐसा नहीं है कि कम ग्रेड मिला तो हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, तो इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग करके उसका ग्रेड भी निकालते हैं। देन पेट्रोलॉजिकल एंड मिनरोलॉजिकल स्टडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट 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 के जगह मैग्नेटाइट आपको मैग्नेटाइजेशन पता होगा। मैग्नेटाइजेशन मींस अल्टर हो जाता है टू हेमाटाइट। मैग्नेटाइट इज गेटिंग अल्टर टू हेमाटाइट। तो एक जगह पे अगर मैग्नेटाइट डिपॉजिट आपका है और मैग्नेटाइट के जगह आपको अगर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो गया है,
तो वहाँ पे हम लोग को बेनिफिशियल नहीं होगा, हम लोग आपका उसका होल प्रोसेस और प्रोसेसिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मैग्नेटाइट को निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या होना है कि हम लोग को पेट्रोलॉजिकल और मिनरोलॉजिकल स्टडी भी करते हैं। तो पेट्रोलॉजिकल मिनरोलॉजिकल स्टडी करने के बाद हम लोग को पता था और मैटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। ये एक सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद सिंथेसिस, सारा डेटा को लेके सिंथेसिस करते हैं और एक G4 स्टेज का रिपोर्ट जमा कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ G4 अगर कुछ अच्छा सिग्नेचर्स मिला, प्रॉमिसिंग एरिया है, तो हम लोग देन वी गो फॉर G3 स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, और एंड दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। तो वहां पे 10,000 1:12,500 10,000 था, यहाँ पे कम हो गया। So that means the scale is getting bigger. So large scale हो गया यहाँ पे, 1:5,000 में करते हैं, 1:2,000 में करते हैं। जियोकेमिकल सर्वे करते हैं, जियोफिजिकल सर्वे करते हैं, डिटेल ग्राउंड जियोफिजिक्स करते हैं, बोरोल लॉगिंग भी करते हैं। अगर बोरोल हो गया हो तो जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल के बोरोल में लॉगिंग करते हैं। दैट मीन्स हम लोग का जो नॉर्मली ग्राउंड जियोफिजिक्स क्या होता है कि एरिया में क्या क्या वेरिएशन होता है, एरियल वेरिएशन हम लोग देखते हैं। तो बोरोन लॉगिंग करने से क्या होगा ना, बाय डेप्थ भी वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा डेप्थ तक आपका मिनरलाइज्ड है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। देन पिटिंग ट्रेचिंग भी होता है और ड्रिलिंग भी होता है फॉर आयरन एंड मैंगनीज। G3 स्टेज में बोरल स्पेसिंग 200 to 400 मीटर के बीच होता है, नॉर्मली 200 फॉर आयरन। देन उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं, पिटिंग ट्रेंचिंग का सैम्पलिंग लेते हैं, और जो भी ड्रिल कोर हुआ होगा सो ड्रिल कोर सैंपल भी लेते हैं और उसको हम लोग एनालिसिस के लिए भेजते हैं। देन वी गो फॉर पेट्रोग्राफी एंड मिनरोलॉजी स्टडी, एज ऑलरेडी आई हैव मेंशन। देन सिंथेसिस, अगर सिंथेसिस में अगर अगेन प्रॉमिसिंग एरिया है, देन वी गो फॉर G2 स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, सो दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सप्लोरेशन। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे मैपिंग, यहाँ पे और भी बड़ा हो गया स्केल, 1:2000 to 1:100। जियोकेमिकल सर्वे करते हैं, चैनल्स सैम्पलिंग भी करते हैं। देन जियोफिजिकल सर्वे, बोरल जियोफिजिकल सर्वे एंड बोरल लॉगिंग करते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल लाइक सिस्टमैटिक पिटिंग एंड ट्रेंचिंग वी डू। देन ड्रिलिंग मीन्स ड्रिलिंग वी डू। देन सैम्पलिंग, इन सैम्पलिंग what are the samples we take? Pitting trenching sample, core sample, bulk sample, and a collection of geoenvironmental parameters. And sometimes what we take water sample also. वाटर कंटामिनेशन क्या है और जियो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के लिए क्या क्या हम लोग जो भी मिलेगा वाटर सैंपल भी लेके स्टडी करते हैं। देन पेट्रोग्राफी स्टडी और बेनिफिशियल स्टडी, ये जो बल्क सैंपल लेते हैं उसको हम लोग बेनिफिशियल स्टडी के लिए भी करते हैं। बेनिफिशियल स्टडी मतलब उसमें आपका वेदर इकोनॉमिक है कि नहीं, एंड फिजिबिलिटी है कि नहीं, एंड उसमें बहुत कुछ चीजें हो जाता है जो माइनिंग रिलेटेड होता है कि माइनिंग एक्टिविटी ठीक ठाक से हो पाएगा कि नहीं। देन अगेन अगर ये भी प्रॉमिसिंग है तो वी गो फॉर G1 stage. G1 stage means detailed exploration. This is basically the pre-mining stage. Okay. So pre-mining stage मतलब माइनिंग से जस्ट पहले वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है ना कि आप ड्रिलिंग बहुत ही क्लोजली हो जाता है, ड्रिलिंग बहुत ही क्लोज हो जाने से आपका कंट्रोल पॉइंट्स ज्यादा हो जाता है। सो कंट्रोल पॉइंट्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या है ना कि डिटेल 3D पिक्चर आ जाएगा आपका मिनरल डिपॉजिट का। बेनिफिशिएशन हो पाएगा कि नहीं वो भी स्टडी करते हैं, बेनिफिशिएशन स्टडी। सो सैंपल्स वी सेंड फॉर बेनिफिशिएशन स्टडी, उसमें पता चल जाता है कि प्रॉफिटेबली हम लोग उसको बेनिफिशिएट कर सकते हैं कि नहीं। देन इकोनॉमिकल एंड जियोलॉजिकल है, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि ये जो विद रेस्पेक्ट टू योर प्लेस ये फिजिबल है कि नहीं माइनिंग के लिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही रिमोट एरिया हो जहाँ पे आपका गाड़ी भी ना पहुँच पाए, या तो जहाँ पे कुछ सपोज वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या जो भी हो जहाँ पे आपको परमिशन ना मिले, या तो वो सब आपको देखना है फिजिबिलिटी स्टडी में। एंड ऑल्सो व्हाट सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइनिंग आप कुछ भी करें वाटर सोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो भी आपका नियर बाय वाटर है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, और है तो कितना दूर पे है वो सब भी देखते हैं। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद
whether my mining is becoming economic or not. That also you need to see there. So normally G1 stage GSI में नहीं होता. Okay. So MECL others they do. So हम लोग GSI में G2 stage तक करते हैं. Then after that we give a report to Ministry of Mines and state government. So basically the exploration for mineral deposits में essentially involve 4 stages. आपको बोल दिया है, reconnaissance survey, preliminary exploration G3, then general exploration G2, then detailed exploration G1. ये स्टेज में जो भी एक्सप्लोरेशन हुआ, सो दे लेड टू 4 रिसोर्स कैटेगरी. लाइक उसी के हिसाब से हम लोग का रिसोर्स का कैटेगरी होता है. वो कैटेगरी क्या करता है, दे रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ जियोलॉजिकल एश्योरेंस. लाइक इसको हम लोग अगर बोल देते हैं कि एक डिपॉजिट है, या तो रिकॉग्निशन मिनरल सर्वे है, या तो इंडिकेटेड है, या मेजर्ड मिनरल रिसोर्स है. इतना अगर कोई भी वर्ड भी आपको बोल दे, so they can understand, okay, geologically fine, economically fine, feasibility also fine, done. That means very good. So like that हम लोग उसका नेमिंग भी करते हैं. So this is named, or this is named with the help of UNFC. UNFC, that means United Nations Framework Classification for Resources. So basically UNFC is an international scheme for the classification, management and reporting of energy, mineral and raw material resources. So this is globally accepted. So on the basis of that, आपका ये वाला 111 देखिए, 111 जो कोड है, that means proved mineral reserve. That means economic wise बढ़िया है, geologically बढ़िया है, feasibility भी बढ़िया है. ठीक है. अगर आपका इकोनॉमिक कम है, फिजिबिलिटी बढ़िया है और जियोलॉजी भी बढ़िया है, तो 211 हो जाएगा. तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन वगैरह देख सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बोरहोल प्लानिंग. लाइक द एम ऑफ द ड्रिलिंग इन मिनरल एक्सप्लोरेशन टू एस्टैब्लिश द सरफेस मिनरलाइजेशन. सो ड्रिलिंग हम लोग क्यों करते हैं? पहले क्यों करते हैं? क्योंकि सरफेस में तो मुझे मिल गया आयरन, नीचे कहाँ तक है वो भी तो मुझे पता करना है. सो नीचे कहाँ तक है, तो उसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मुझे ड्रिलिंग करना पड़ेगा. And this planning of drilling is guided by the types of and stages of exploration required. क्योंकि ड्रिलिंग हम लोग जो करते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप का करते हैं. क्योंकि सपोज आपका G3 में कर रहे हैं, जहां पे आपका 200 मीटर्स का बोरहोल डिफरेंस है. दैट मींस एक बोरहोल अगर यहाँ पे है, तो नेक्स्ट बोरहोल होगा आफ्टर 200 मीटर्स. इन बिटवीन क्या हो रहा है आपको पता नहीं है. इन बिटवीन वहां पे उतना डेप्थ में मिल रहा है, या कम मिल रहा है, या बिल्कुल नहीं है, दैट यू डू नॉट नो. जो कि इन बिटवीन आप लोगों को G2 में मिलेगा. फिर उसके बीच में भी आप G1 में भी आपको ड्रिलिंग होगा. सो आप जितना स्टेजेस एक्सप्लोरेशन स्टेज के ऊपर जाएंगे, उतना कंट्रोल आपका आएगा, या तो एक क्लियर पिक्चर आएगा एक डिपॉजिट के ऊपर. So these are the prerequisites tools for planning a borehole. Like we should have a good geological map, preferably large scale. Then surface geochemical map or profile, geophysical data, aerogeophysical and ground geophysical data. Then integrated map. Integrated map means एक जियोलॉजी, फिजिक्स और जियोकेमिकल पूरा तीनों ही एक ही मैप में होगा, इंटीग्रेट हुआ होगा. सो उसमें क्या होता है ना कि अगर जियोलॉजिकल सिग्नेचर जहाँ पे है, जियोफिजिकल वहां पे है कि नहीं, और जियोकेमिकल वहां पे है कि नहीं, तीनों अगर कोइंसाइड कर जाता है सिग्नेचर्स, देन दैट इज पक्का. सो लाइक दैट इंटीग्रेटेड मैप वी प्रिपेयर. देन जियोलॉजिकल प्रोफाइल. जियोलॉजिकल प्रोफाइल मतलब आपका नीचे आप ड्रिलिंग करेंगे. सो जियोलॉजिकल प्रोफाइल आपको देखने से ही आप प्रपोज कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ तक रॉक टाइप है, 100 मीटर्स तक ये वाला रॉक टाइप है, तो हम लोग को 100 मीटर्स डेप्थ तक पक्का ड्रिलिंग करना पड़ेगा. सो इसीलिए जियोलॉजिकल प्रोफाइल वो एरिया का अगर हम लोग को पता नहीं होगा, तो हम लोग प्रपोज नहीं कर सकते हैं कि ड्रिलिंग कितना मीटर तक हम लोग का जा सकता है. Then the azimuth of the borehole, the angle of inclination of the borehole,
क्योंकि फ्लैट और पूरा फ्लैट डिपॉजिट है लाइक आयरन और, तो हम लोग पूरा वर्टिकल बोरहोल करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ कुछ मिनरल कमोडिटी के लिए हम लोग इंक्लाइन बोरहोल भी करते हैं। सो उसका एंगल कितना चाहिए। देन जियोकेमिकल जियोफिजिकल एनोमली। देन अगर कहीं पुराना ओल्ड वर्किंग हो, सो पुराना ओल्ड वर्किंग होना भी एक इंडिकेशन है, लाइक यहाँ पे एक मिनरल कमोडिटी हो सकता है। क्योंकि पहले जमाने में तो ओल्ड वर्किंग होता था, सब हाथ में ही खुदाई कर लेते थे। तो उस टाइप का अगर कहीं सिग्नेचर्स है जो नीचे जा नहीं पाएंगे, ऊपर का माल को निकाल दिए हैं, तो वो भी हम लोग का बहुत बड़ा एक सिग्नेचर मिल जाती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम लोग का डेप्थ कंटिन्यूटी रहता है, सो दैट आल्सो यू नीड टू सी। देन डेप्थ ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ओर बॉडी, तो कितने डेप्थ तक आपका ओर बॉडी जा सकता है, दैट आल्सो यू नीड टू सी। देन एनी अदर एनोमली जोन। Then these are the guidelines for planning of a borehole. Uh, uh, the intersection at most promising zones for initial borehole. That means आप पहला वाला जो borehole होता है, तो इंटरसेक्शन आप ऐसा प्लान कीजिए सो दैट इंटरसेक्शन एक अच्छा जोन में हो। इंटरसेक्शन एक अच्छा जोन में होने से क्या होता है ना कि अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर सकते हैं फर्दर जाने के लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग आपका इजी हो जाता है। आप पहले से ही आपका अगर नेगेटिव इंटरसेक्शन हो जाएगा, आप ड्रिल कर दिया और वहां पे नहीं मिला, आप पागल हो जाएंगे, बोरहोल में कहाँ डालूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट बोरहोल कहाँ डालूंगा तो क्यों डालूंगा, क्योंकि मेरा नेगेटिव आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा प्लान करना है सो दैट इंटरसेक्शन पक्का आए, दैट मीन्स बोरहोल में हम लोग को माल मिले। देन बोरहोल इन द हैंगिंग वॉल साइड, लाइक हमेशा तो यहाँ पे बेडेड डिपॉजिट नहीं होता। हम लोग का आयरन के केस में ये आपका बेडेड डिपॉजिट टाइप का यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपका बेडेड डिपॉजिट टाइप का मिल जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या होता है ना, बोरहोल वर्टिकल बोरहोल कर देते हैं, इस टाइप का वर्टिकल बोरहोल देते हैं। नीचे कहाँ तक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे तक है, यहाँ तक है या यहाँ तक है। लेकिन अगर मेरा एक डिपॉजिट है, मेरा ये एक सरफेस है, दिस इज माई सरफेस, दिस इज माई सरफेस, और मेरा एक एक जो मिनरल जो लोड है वो ऐसा है। ओके, सो दिस इज नॉट बेडेड, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बोरहोल, मुझे एंगुलर बोरहोल डालना पड़ेगा। तो इसमें हैंगिंग वॉल कौन सा है और फुट वॉल कौन सा है, सेम दिस हैंगिंग वॉल फुट वॉल कंडीशन इज सेम फॉर फॉल्ट आल्सो। ये मेरा सरफेस है, यहाँ पे एक फॉल्ट है, तो इसमें हैंगिंग वॉल कौन सा है, सेम वॉल कौन सा है। तो ये आपको हमेशा रखना है कि ये मेरा फॉल्ट प्लेन हो गया। ओके, दिस इज माय फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन के नीचे जो है उसको हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, फुटबॉल, एंड दिस इज माय, उसके ऊपर जो रहेगा ये मेरा। इस केस में यहाँ पे फॉल्ट था, यहाँ पे मेरा और बड़ी है। तो इस केस में ये मेरा ये हो गया ओवर बॉडी। सो ओवर बॉडी जिसके ऊपर है वो मेरा हो जाएगा फुटबॉल, ये हैंगिंग वॉल। ओके, so here you see the borehole in hanging wall side. So you need to see or you have to plan the borehole should start in the hanging wall side. That means यहाँ से अगर मैं borehole start करता हूँ तभी यहाँ पे intersection करेगा। So hanging wall side में ही मुझे borehole plan करना है, यहाँ पे कर दूंगा तो गया। So फुटबॉल साइड में नहीं करना है, so आपको हैंगिंग वॉल साइड में ही आपको करना है, या तो वर्टिकल करना है या तो एंगल वाला करना है। नॉर्मली एक एंगुलर ओवर बॉडी के लिए हम लोग एंगुलर बोरहोल डालते हैं। देन बोरहोल एंगल शुड बी बिटवीन 40 to 90,
सो इन केस ऑफ आयरन डिपॉजिट यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको एक एंगुलर है तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 45 डिग्री में करते हैं एक एंगुलर बोरोल के लिए, ठीक है। सो दिस बोरोल एंगल शुड बी बिटवीन 40 टू 90 डिग्री। अगर 40 से नीचे कर गया और भी अगर स्लैंडिंग कर गया, ऐसा अगर मैं कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बोरोल डेविएशन का चांसेस ज्यादा रहता है। तो बोरोल यहाँ से निकाला, यहाँ से ऐसा 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 कहाँ कहाँ घूम जाता है उसका हिसाब नहीं, फिर से जाकर यहाँ पे सब से निकल जाएगा, दैट प्रॉब्लम ऑल्सो होता है। देन इंटरसेक्शन ऑफ ओजोन एट हाई एंगल, सॉरी देन इंटरसेक्शन ऑफ ओरिजिन एट हाई एंगल। सो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री में ऐसा करके एंगुलर वाला क्यों डाला, क्योंकि ये मेरा बोरोल है, ओके, एंड यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन। सो ये जो एंगल है यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है, ऐसा करके 90 डिग्री हो रहा है। सो हम लोग को ये देखना है कि इंटरसेक्शन हाई एंगल में हो, so that you have to you need to see, that is the reason why I have given a angular borehole here. Then first borehole should be short as far as possible, not too short that it doesn't reach the ore body, okay. So हम लोग को जो पहला जो borehole देना है वो उतना बड़ा नहीं देना है, उतना बड़ा नहीं देना है, मतलब बड़ा डेप्थ, ज्यादा डेप्थ वाला नहीं देना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका बहुत ही कम डेप्थ देते और वो ओवर बॉडी तक पहुंचे नहीं। तो इसीलिए आपका जहां तक और बॉडी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो वहां तक जीजिए, अदरवाइज अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। वहां से आपको अगर पॉजिटिव मिलता है देन वी कैन गो फर्दर हम लोग प्लान कर सकते हैं। देन फॉल्ट फ्रैक्चर जोन्स, ह्यूज थिकनेस ऑफ हार्ड रॉक शुड बी अवॉइडेड। देन स्टैंडर्ड कोर साइज शुड बी मेंटेन्ड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिलिंग इज टू बी एश्योर्ड, क्योंकि वाटर नहीं होने से ड्रिलिंग होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हार्ड रॉक बहुत ही आ जाता है, तो हम लोग वाटर यूज करते हैं टू फॉर लाइक टू फैसिलिटेट द ड्रिलिंग प्रॉपर्ली। Then for a simple ore deposit like geological simple ore deposits which is homogeneous extent and horizontal to subhorizontal to low dipping and covering large areas like a coal, limestone, iron ore, manganese और bauxite, इसमें क्या होता है कि homogeneous रहता है और normally subhorizontal रहता है, और डिपिंग करता भी तो बहुत ही लो करता है। सो इन दैट केस क्या होता है ना कि हम लोग वर्टिकल बोरहोल डालते हैं इन ए रेगुलर ग्रिड पैटर्न। रेगुलर ग्रिड पैटर्न में क्यों डालते हैं, दैट इज बिकॉज ग्रिड पैटर्न में आपको डालने से रिसोर्स एस्टिमेशन में आपको बहुत ही ईजी हो जाता है, एंड ग्रिड पैटर्न में करने से आपको यू विल नॉट मिस एनीथिंग। अब हापाजर्डली करेंगे तो आपका क्लियर पिक्चर डाउन बिलो क्या चल रहा है क्लियर पिक्चर नहीं आएगा। So this is grid pattern is done in 400 by 400, 200 by 200, and 100 by 100. So this depends on the stages of exploration, and this grid pattern can be modified according to the situation. कहाँ कहाँ पे मेरा एरिया अगर टेढ़ा है तो वहां पे मेरा ग्रिड पैटर्न नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। Okay, so during drilling what we do for iron exploration, during drilling after drilling हम लोग का कोर मिल जाता है, ड्रिल कोर मिल जाता है। सो ड्रिल कोर मिलने से हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा ड्रिल कोर को सजा देते हैं, लाइक इस टाइप का हम लोग का बॉक्सेस में सजा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स पूरा सजाया गया है, एंड हियर यू कैन सी here here यहाँ पे मार्किंग्स है, यहाँ पे आप देखिए 68.80, 68.5, यहाँ पे 69.1, 69.6, 70.5, 71.3। सो इतना मीटर वाइज हम लोग का डेप्थ वाइज हम लोग इसको सजा देते हैं कि क्या क्या कोर मिलता है। तो उसमें हम लोग को क्या होता है ना कि पता चल जाता है कि मेरा मिनरलाइज जोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है और नॉन मिनरलाइज जोन क्या है।
क्योंकि मैं अगर सैंपल भेजता हूँ एनालिसिस के लिए, अगर नॉन मिनरलाइजेशन जोन से लेता हूँ तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सिग्नेचर्स नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिल रहा, तो मैं उसका सैंपल क्यों लूँ जहां पर मुझे आयरन मिल रहा है? क्योंकि आई एस्टिमेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये आयरन है, ये आयरन और है कि नहीं। सो आई एस्टिमेशन से आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या है ना कि देख सकते हैं कि मेरा जोन कौन सा है, आयरन रिच जोन या तो मिनरलाइज जोन। सो मिनरलाइज जोन से हम लोग को सैंपल करना है, तो हम लोग उसको कोर सैंपलिंग करते हैं क्योंकि वो कोर से आया आया है। So after examining of the core during core logging, the mineralized zones are demarcated and samples are zones are fixed. So हम लोग को कोर मिलने के बाद the mineralized zone हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं एंड कहाँ से सैंपल लेना है वो भी फिक्स कर लेते हैं। The sample lengths may vary depending on the type of deposit, nature of mineralization, core size, core recovery. But normally आयरन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक मीटर पे एक एक सैंपल लेते हैं, एक एक each we take one sample from each meter. So besides sampling towards the hanging or footwall, contacts are also precisely learned to define the limit of mineralization. So ये तो this is not valid for like iron ore, क्योंकि hanging wall footwall तो हम लोग यहाँ पे मेजर नहीं करते। The core loss should be adjusted in all the samples in a particular round. तो ये core loss क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि core loss क्या होता है। So these samples are cut into two halves in longitudinal fashion by core splitter और core cutter. यहाँ पे आपको वो कैसे सैम्पलिंग होता है आपको इसके बाद में दिखाऊंगा। Then subsequently the samples are crossed and powdered up to 120 mesh. The size of the samples may be reduced by coning and quartering process. Half of the sent to chemical laboratory and other half is preserved as a duplicate sample for further studies and check analysis. आधा हम लोग केमिकल डिवीजन को भेज दिए और आधा हम लोग के पास रखते हैं। केमिकल डिवीजन में अगर कहीं फेंक दिए या भूल गए या कुछ मिसप्लेस हो गया, उसके लिए भी हम लोग उसका डुप्लीकेट रखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का सैंपल कलेक्शन कैसे होता है नॉर्मली, ये सपोज ये मेरा 1 मीटर है, ओके, सपोज दिस इज माय 1 मीटर, यहाँ पे सैंपल नहीं है, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी दिस सैंपल हैज बीन टेकन, ठीक है, ये वाला सैंपल ऑलरेडी लिया जा चुका है, सो बेटर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सपोज मेरा 1 मीटर एक, जस्ट अ मिनट, मेरा एक 1 मीटर यहाँ से 41 यहाँ पे है, 40 सॉरी 44 है, ओके, यहाँ पे ये 44 है, सो नॉर्मली दिस इज 1 मीटर, ओके, सो 44 है, सो ये डेफिनेटली ये वाला क्या होगा ना 43 होगा मीटर, ओके, 43 मीटर का डेप्थ है और ये 44 मीटर का डेप्थ है, सो ये मेरा पूरा टोटल एक हो गया 1 मीटर का। सो एक 1 मीटर से मुझे एक ही सैंपल लेना है। तो नॉर्मली अगर मेरा कोर होगा, अगर कोर होगा वो ये टोटल सपोज एक कोर है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा इनटू टू हाफ्स, वर्टिकली स्प्लिट करूंगा, एक हाफ को, ये एक हाफ को पूरा मिक्स करूंगा और देन आई विल क्रॉस, वो कोर का एक हाफ को आई विल टेक आउट, एंड प्रोसेस, उसके पाउडर करूंगा और कोनिंग प्रोसेस, कोनिंग पटरिंग करूंगा, ओके। अदर हाफ क्या रहेगा कि यहाँ पे हम लोग कोर बॉक्स में रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर नहीं था, ओनली पाउडरी कोर था, तो पाउडरी कोर से ऊपर वाला हिस्सा हाफ हम लोग ले लिए हैं और नीचे वाला हाफ यहाँ पे है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी उठा गया है, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि पाउडरिंग करते हैं, देन पाउडरिंग करने के बाद कोनिंग पाउडरिंग करते हैं सो दैट होमोजेनाइज्ड हो जाए। होमोजेनाइज्ड होने से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आप ये टोटल 1 मीटर का मैं ग्रेड निकालूंगा, अगर पर्टिकुलरली होमोजेनाइज नहीं होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा रेडिश है, यहाँ पे आपका ज्यादा ब्राउनिश है, ये ज्यादा थोड़ा हाई ग्रेड आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा लो ग्रेड आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लो ग्रेड आएगा, यहाँ पे थोड़ा हाई ग्रेड आएगा, ठीक है। इसको अगर मिक्स नहीं करके एक यूनिफॉर्मिटी नहीं लाऊंगा तो रिजल्ट विल वेरी।
दिस इन देन ये एक सॉफ्ट लैमिनेटेड हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी सैंपल लिया जा चुका है. Then we will go for resource estimation. तो रिसोर्स एस्टिमेशन में हम लोग वी शुड नो व्हाट इज ए रिजर्व एंड व्हाट इज रिसोर्स. सो नॉर्मली हम लोग तो रिजर्व एस्टिमेशन बोलते हैं. द डिफरेंस वी शुड नो. ओके, सो नॉर्मली रिजर्व क्या होता है? इट्स रेडी फॉर एक्सप्लॉइटेशन. मतलब रिजर्व क्या होता है ना कि पूरा सब कुछ फिजिबिलिटी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और सब कुछ पूरा प्रूव्ड है और पूरा माल पूरा पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग उसको माइनिंग कर सकते हैं. तो दैट इज माई रिजर्व. रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स होता है एक एरिया में मैं एक्सप्लोरेशन किया, उस एरिया में टोटल आयरन कितना कंटेंट है क्या है उसको पूरा निकाल दिया. सो दैट इज माई रिसोर्स. ओके, दैट इंक्लूड्स my problems, that also includes my problems, my feasibility या तो इकोनॉमिक, ये सब टर्मिनोलॉजी उसमें आता है. मैं फिजिबिलिटी चेक नहीं किया हूँ या तो मैं उसमें इकोनॉमिक भी चेक नहीं किया हूँ, सिंपली मैं कैलकुलेट कर दिया. उसको कैलकुलेट करके छोड़ दिया, बाकी कंसीडर नहीं किया कुछ. बट रिजर्व क्या होता है कि उसको भी हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग रादर the economic point of view, we process in terms of economic point of view and feasibility. ये सब देखने के बाद हम लोग उसको रिजर्व बोलते हैं. तो वो हो जाता है हमारा रिजर्व एंड रिसोर्स. सो बेसिकली रिजर्व इज ए सब ग्रुप ऑफ रिसोर्स. आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिसोर्स इज बेटर. यहाँ पे आपका कर्नाटका में एक कुदरमुख है. कुदरमुख वहाँ पे एक मतलब एक माइनिंग है वहाँ पे. ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है कि उसका रिसोर्स बहुत ज्यादा है. अभी माइनिंग चल रहा था. मैं ऑडिबल? यस और नो? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. बट somebody posted like it is not audible. No, sir, you are audible. Okay, thank you. So one example is here in Karnataka we have a mines like Kudarmukh, near Kudarmukh mines. वहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स बहुत ज्यादा है. रिसोर्स ज्यादा है लेकिन कुछ साल पहले उसको वो माइनिंग को बंद करा दिए. जब वो माइनिंग बंद हुआ उस टाइम में भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसको बंद कराया. क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल इशू था और कुछ वेस्टर्न घाट्स का कुछ वही एनवायरमेंटल इशू एज वेल एज फॉरेस्ट का कुछ क्लियरेंस नहीं था. सो इट वाज कमिंग नियर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लाइक दैट. तो उसमें दैट प्रॉब्लम वाज देयर. सो वो बंद हो गया. बट उसमें रिसोर्स है लेकिन रिजर्व बंद हो गया. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिजर्व एंड रिसोर्स. ओके, so next we'll go for resource estimation. Then the resource is the sizing of the ore body, which says about the quantity, quality, amenability to commercial exploitation of a raw material. So इसका significance क्या है? The resources are computed to determine the extent of exploration, development, distribution of values, daily and annual output, production, life of mines. Actually, this is reserve. The lower one is okay, fine. Then how we do estimate? The resource is determined by the multiplying the volume of the ore body by the bulk density. So resource is volume into bulk density. It looks like a simple calculation, but actually not, because to determine volume, we have to consider many parameters. So the resource estimation of the ore body is a complex exercise, depends on the several parameters which have been involved right from the beginning of the prospective stage to systematic drilling in the exploration stage. So these are the parameters required for resource estimation, like what we consider. Okay, the first one is cut-off grade, stoping width, weighted average and average grade, tonnage factor, core recovery thickness, strike influence, deep length correlation of the load. Then we will discuss one by one parameters. So the first one is cut-off grade. So cut-off grade आप लोग को बहुत ही पता होगा या तो आप लोग पढ़े होंगे.
So it is the grade below which we cannot mine the ore economically. So sometimes, like people tell, like if you ask what is the cut-off grade, they tell below which we cannot mine. But you have to put the term economically. Okay, and it also this cut-off grade depends on the economic scenario of the area or the country. Like today, आज like here mining आप iron ore को देख रहे हैं, like हम लोग का minimum 35 or 45 नहीं होने से हम लोग mining नहीं करते, okay 45 नहीं होने से mining नहीं करते, because हम लोग का cut off grade हो गया 45. In the same case in Japan, what they are doing, उन लोग का scarcity है, उन लोग के पास iron ज़्यादा नहीं है, so what they are doing 15% iron का भी वो लोग mining करते हैं. So this is the difference. Okay, how it depends on economic scenario of the area as well as on country. Then international market, commodity, nature of deposit. Nature of deposit होने से again economic term आ जाता है, and basically at the end economy ऊपर depend करता है, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट अगर ठीक ठाक से उसका नेचर अगर ठीक ठाक से नहीं होगा, देन अगेन हम लोग को दूसरा कुछ लाइक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, which may be difficult in terms of economic or feasibility. Then nature of occurrence, consideration of beneficial techniques, method of mining, then requirement of industry, social and environmental aspects. So this is the formula how we calculate cutoff. So CT cutoff grade is MC. MC stands for mining cost. Then MIC milling cost. Then DP depreciation. Then OC overhead cost. MP minimum profit. Okay. So this is how we calculate the cutoff grade. Then these are the cutoff grade. For iron, it is for hematite iron ore, lumpy it is 45 degree, and if it is siliceous iron ore, then 35 degree. 35% of Fe. Then if it is magnetite, we are going down below 15% of Fe. And these are graphite, manganese, gold, oxide. Now in this lecture we are not considering. The next one is stoping width. So the stoping width, the minimum mineable width that can be safely mined. In general, the minimum stopping width is taken at 2 meter for underground mine, and for noble metal, the minimum stopping width may be taken as 1 meter. However, for open cast mining, the bench thickness has to be 2 to 6 meter or even to 10 meters. Okay, so stopping width is very much important in case of underground mining, because that actually, yes, we look for like profit, as well as in the same case we also need to look for safety features also. Okay, so for that stopping width is very much important. Then we go for average grade. The reserve and average grade calculated for different boreholes blocks have to be further average to determine the overall reserve resource of the grade of the deposit with help of the following formula. Like for calculation of average grade of the reserve, this is a reserve of the block into average grade of the borehole of the block divided by the reserve of the block. So this is how we calculate the average grade. Then the next one is tonnage factor or ball density. So the tonnage factor or ball density is a multiplier to the volume of the determined reserve. So this can be determined by the following methods. So normally ball density, as I told, like resource is the volume into ball density. So ball density, how we calculate density? So ball density is different for different minerals. So these can be determined by the following methods. The first one is cubic opening method, then conventional density measurement method, then determination of ball density using drill cores. So now let us discuss the first one, cubical opening method. So in this case, how we calculate, like we dig a pit of 1 meter by 1 meter into 1 meter size, length, breadth, and depth 1 meter, 1 meter, 1 meter size, and weigh and take out all the materials. Then we weigh all the materials, and this weight is the tonnage factor. This method is suitable for vault mineral deposits like iron ore, mineral, as well as rock phosphorite.
And normally in mining stage, this it is determined by this method, mining during mining stage. Then the next one is conventional density method. So in the how this is calculated, it is calculated like by weighing the sample in the air and in the water by a steel yard balance. So the formula is, so bulk density is W1 by W1 minus W2. So W1 stands for weight in the air, then W2 stands for weight in the water. The third one is bulk density using drill core. So in that case, what we do, we measure the length of the core or half split core. Okay, so length we measure. So here you can see. So this is the length of the core, and after that, uh, the volume is pi r square if the core is not split, and if the core is half split, then half pi r square. So V stands for volume, R radius, and length of the core. And bulk density M by V. Okay, so mass by volume. Then core recovery. In between, I was talking about core recovery. Then what is core recovery? Because okay, let me show the pictures. Otherwise, you can understand. Okay, here you see. Here you can see. These are the cores we got, but particular this part we are not getting any core, but after that we are getting core, and in between also we are not getting. Same in case of here also. Here also up to this length we are not getting core, and after that we are getting core. Okay, so that is called core loss. So then how core loss and how to calculate the core recovery? So core recovery is calculated as LR by L into 100. LR stands for the core recovered, and L is the run of the length. Okay, so for example, in this one, suppose this is my one run. One run means here is the peg, and again the next peg is here. Okay, so from here to here and here to here, it is almost 0.9 meter. It is not 1 meter, 0.9 meter. Starting from here, coming here, again here, up to this. Okay, so this is my 1 meter run. So within that 1 meter run, my how much core is recovered? Okay, how much core is recovered? The core is recovered around 50%. Here it is recovered, then from here it is recovered up to this place. So 50% is recovered and 50% is lost. So this is the core recovered, that means 50% of my recovered. Okay, that means my total length was 90 centimeter. 90 centimeter, out of that 45 centimeter is recovered, and L is the run length. So that means here the 45 divided by 90 into 100. So that is my core recovery. So core recovery plays important role in computation of the reserve estimation of core recovery. Okay, so core recovery is the load is if it is more than 95%, then the reserve is calculated. It may be taken at 100%. If you are getting 95% core, if 95% of the the core is recovered, then we calculate as 100%. And if it is 95 less than 95%, then certain correction factors have to be applied. Then how we apply correction factors? So there are different methods to apply for correction factor. The first one is dilution method. So dilution method, in this method, the assay value of the whole run, assuming that the part of the core is not recovered, is barren by this method, the grade will also go down in the assay value. For example,
if your run is 1 meter and core recovery is 0.8 meter and assay value is 60%, that means your grade is 60%. So for 1 meter your grade is coming 60%. So for 0.8 meters, so accordingly 60% का भी हम लोग proportionately ले लेंगे 80%. So 1 meter से recover हुआ 8.8. So that means 80% recovery, 100% recovery हुआ 80%. So if assay value is total is coming 60%, तो उसका 80% लेने से 48% आ जाएगा. So this is one method. Then the next one is reduced width method. So in this case, the core loss is considered as void, and the load width is taken as the length of the core recovered. Thus, thickness of the load will reduce, however, the grade will as for the S value. So that means suppose this is my core. Okay, this is my core. So if this much is core lost, so this particular portion is loss. Okay. So in that case, the loss we do not consider, and we considered like this whole core is a void place, but the length is same. So उसका volume जो है यहाँ पे हम लोग void create करके manage कर लेते हैं. So in that case, total जो assay value है उसको हम लोग ले लेते हैं. Okay, so that is reduced width method. But in that case, what will happen? The volume, the width will be reduced. The width of this core that will be reduced. Then equal grade method, the core recovery is greater than 95%. The recovered length is taken at the grade of the run with assumption that uncovered portion also contains the same. So that means, suppose this is my core. And this is my run. This is my run and this is my core. So there is a gap of this much, around 10 to 20%. So in that case, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो भी ग्रेड है ये ऊपर वाला भी सेम ग्रेड होगा, ऑल्दो हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन ग्रेड कंटिन्यूटी होगा. सो इन दैट केस हम लोग का ऐसे वैल्यू चेंजेस नहीं होता. Then thickness of the ore body is measured by the computing the thickness of the load in individual hole for which true thickness is needed. Okay, तो उसमें क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ पे मेरा ओर बॉडी ऐसा है. सो डायरेक्टली बोरहोल हम लोग का यहाँ पे होता है. सो बोरहोल का सिंबल ये हो गया. बोरहोल का जो सिंबल है, ये जो थिकनेस होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग ले लेते हैं. ओके, इन केस ऑफ ए massive body. But in case of oblique borehole, the ore body is in apparent thickness which is need corrections. So suppose मेरा यहाँ पे एक ore body है, ठीक है, ये एक ore body है, यहाँ पे एक ore body है, and from here I am putting the drill hole. So in that case, what happens? So I need to find out the true thickness. So I cannot find, this is not my true thickness. So for that, my true thickness is this portion, particular portion. Okay. So I need to apply some corrections. इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है, तो mathematical calculations are there. So by the mathematical calculation, I can find out. Sorry. Then the strike length. The strike length is determined obviously, so opening of the along with the strike of the core body. The strike length of each opening is determined on the basis of nearest point and gradual variation. So we will discuss about strike length. Like suppose this is my borehole and this is my borehole. Okay. So, and so this is my middle portion. This is my middle portion. So यहाँ पे एक मेरा borehole है, यहाँ पे एक borehole है. So इसका strike length यहाँ तक middle तक जाएगा, इसका strike length यहाँ तक middle तक जाएगा. So that we normally consider. The next is there are some principles and assumptions on which we go for resource estimation. The following, the ore reserve and the grade estimation principle involve certain unavoidable assumptions. So these are based upon some
accepted principles like the sampling followed is reliable. So what and random enough for enabling sampling average judicially arrive at the approximate deposit mean. So that means हम लोग जो सैंपल जो भी लेते हैं so उसको हम लोग बोलते हैं कि this is reliable and random enough. ठीक है. So it is not rather हम लोग का इसके साथ क्या not preferential treatment is there. So that we assume. Then the basic parameters established in any ore based on upon the point estimates such as surface, railroads, extend to the adjoining areas only in consonance with the appropriate principles and interpretation. The commonest principle of rule of gradual change and rule of nearest point have capability of generating realistic estimate in matter of volume computation. So this we are going to discuss like a gradual change and nearest point. Nearest point. So this is rule of gradual change. So according to the rule of gradual change or law of linear function, all the elements of a mineral body can be expressed numerically, change gradually and continuously along the straight line connected between two lines. So that means, and a great thickness reserve of any unknown point or block falling in between blocks can be calculated. Suppose यहाँ पे मेरा एक बोरोल है, यहाँ पे एक मेरा बोरोल है, ठीक है. So the first point का मतलब होता है कि all the element का कुछ भी जो functions होता है they can be expressed numerically and they change gradually. Suppose यहाँ पे ये मेरा 40 है, okay, 40 ये at a 40 depth में हो I'm getting iron ore and here I'm getting 30 मीटर में डेप्थ. सो यहाँ पे मुझे ड्रिलिंग करने के बाद 30 मीटर में 30 मीटर के डेप्थ में मुझे आयरन ओर मिला, यहाँ पे 40 मीटर में मिला. सो द चेंज, सो इट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल the I will join these two, so that means the changes in between is gradual and continuous. And the second point is the grade thickness and reserve of any unknown point. Suppose I would like to know what is the what is at what depth I am getting iron ore here. So यहाँ पे भी if I am putting down it one, okay, so that also I can get. Since it is gradual, so accordingly it will go, it will be like it will be here it is 37 or 36 meter down below. Okay, so that means, so अगर ये thickness है, इवन ग्रेड भी होगा यहाँ पे, इसमें अगर ये बोरॉल में मुझे अगर ग्रेड अगर 50 मिला और इसमें अगर मुझे 60 मिला, ओके, सो इन बिटवीन मुझे 55 मिलेगा करके अज्यूम कर रहा हूँ. ओके, सो दैट मींस इन बिटवीन ये दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रेजुअल चेंज. सो दिस इज हाउ कैलकुलेट मैथमेटिकली. मैं आपको बता दिया हाउ वी कैलकुलेट. सो ऑलरेडी वट एवर आई टोल्ड दिस इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली. Then a rule of nearest points. So the rule of equal influence, the value of any point between two stations is considered constant equivalent to the value of nearest station. In general case, a boron A and B with thickness T1 and T2, the value of each one extend to the midpoint between holes. Any point on the AB line in the area of T1, T2 except AM is inside the linear area of the influence of a station AB. This property is given to the rule of. So इसका meaning ये होता है कि suppose this is my one borehole, this is my one borehole. So as a rule of nearest point, so इसका जो influence है, it will go up to the mid distance, and इसका जो influence है, it will also give of the mid distance. And in between, like here you can see the thickness is more here and less here. So that also what we can do, we can take an average and calculate. Okay, so like this we can find out the like up to what extent it continues or the influence continues. So normally resource estimation we carry out geostatistically, statistically and manually. Manually, geostatistics, with the help of geostatistics also you can calculate by the help of statistical and manual also. And how? So these are some of the techniques or some of the methods how we calculate the
resource estimation. So ore reserve calculation methods, this is manual for manual how it is. Then for homogeneous bedded horizontal and low dipping deposits, included area method, extended area method, triangle method, polygonal method, method of isocline, isopac method, transverse section method. And for model steeply dipping tabular ore body, cross section method, longitudinal section method, level plan method. So several methods are there. So some of the methods I will tell you now. So this is the first one is included area method. That means if you have 4 boreholes, borehole 10, here you can see borehole 10, 11, 12 and 13. So what is the area included in between these boreholes? That we take into consideration. And after that we calculate. Okay, so basically हम लोग को क्या करना है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो एरिया तो मुझे मिल गया यहाँ से, area I can get and the thickness I can get, the volume I can get, volume into voltage is my resource. The next is extended area method. Extended area method means suppose the center points are my borehole points. Okay, here you can see this is my borehole point, this is my borehole point. So so as for the name extended area method, how much it can extend? So it can extend up to the midpoint of this next borehole. Okay, because influence will be up to the midpoint. So from other sides we have taken midpoint, and here thickness I know because I have already done drilling. So thickness I know, area I know. Okay, so that is my volume, and volume into voltage is my resource. Then triangle method. Triangle means we connect all the borehole points and make different triangles like this. And from triangle, you know how to calculate volume and then resource. Then again, the next one is polygonal method. So we put a point in the midpoint, or rather as a straight line in the middle. Okay, so here is a borehole and here is a borehole, and this is the mid. So influence will be up to the mid of this one. Then here in this case also, here also borehole. So influence will come up to this. Here also a borehole. So influence will come up to this. So like that, that influence we connect and make a polygon. So and from polygon, my area is there. Thickness I know from drilling I can calculate. So next is cross-section method. So in cross-section method, how we calculate? The cross-section or transverse section is prepared along the ore body. Okay. So आपको suppose यहाँ पे मेरा different boreholes मुझे मिल गया. Suppose यहाँ पे मेरा different borehole मिल गया. And this is my strike length of the ore body. What I can do, I can prepare different cross sections along this one. Cross sections means along the strike, not across the strike. So like that along the borehole, I can prepare different cross sections. So different cross section में क्या होगा? So this is my plan view, this is my plan view, and this is my cross section view. Okay. So cross अगर आ गया. So from the borehole, I can get the area from the area. Okay. So area मुझे मिल जाएगा, and for this borehole I can take the strike influence from the either side half of that one. So that this is one direction and this is my area, that also I can calculate, and from that I can calculate the volume and volume into voltage. The next is longitudinal vertical projection. Like here I showed, this is my cross section, cross sections. Okay, and the other way it will be longitudinal vertical section. Sorry. Okay, so the other way it will be longitudinal vertical section. So same way, but my section direction will be different. So that way also I can calculate the
So this way I can calculate the area, and area into the next influence I can calculate that will be my volume. Then I can calculate the resource. Then in case of level plan also, what we do, so in different labels, so what is my thickness? So that thickness also we can I can plot in a label, in the surface I can plot, and I can after that I can figure out what is the load. Okay, so this will become my, like here, load in this particular place. So from different labels, I can calculate the load, and then the thickness, it will give the volume, then resource. So these are, I think, different methods how we calculate or how we do resource estimation. And this is all. Thank you. I think next speaker, our sir, our director, Sri Samakata Bhutia sir, is waiting for us. And this is how we do resource estimation. And he will now give a case study so that you can understand whatever I told. You can at least understand with a if we can give a example. So sir is going to deal about a case study. So also what are the principles are there, so you can apply them. So okay, thank you. So whatever questions or queries you have, I think we already have a WhatsApp group, so you can post there. We are running out of time, so you all are requested to post there so that we can answer there, as well as we will be posting whatever material available with us, we can post there. So sir, shall we start the next lecture session? If they wish, they can have 5 minutes break. Okay. So participants, you can have a 5 minutes break, but do not get disconnected. I can see that if we give a break, you will get disconnected. So again, it may be a problem to get connected. So kindly do not get disconnected. We can continue, sir. Not a problem. We can continue. Okay. Okay, sir. Okay, so by the time, sir, load is presentation. So let me introduce our director. So Sri Samaprasad Bhutia, Director Technical Coordination. So sir joined GSI in 2001, 2001, and after that he was mainly carrying out exploration as well as mapping. He has worked extensively in Bonai Keunjhar iron ore belt, and for which he has been awarded National Mineral Award. Okay, now it is National Geoscience Award. So he is a recipient of the prestigious National Geoscience Award for his work on iron for iron. Okay, so I think sir is ready. So with this, I request sir to take up this session. Sir, please. Is it visible, Dr. Bari? Yes, sir, clearly. So, very good afternoon to all. So now, whatever theory you have been studied during your college curriculum, during these morning 2 sessions, Dr. Srikanth and Dr. Bari, they have just refreshed your knowledge and memories. And now I will be taking you
to basically, so now we can say we can attend you to the well-known iron ore belt, Bonai Conjur belt, which also you all know it is a horseshoe belt also. So we'll be dealing the structure and stratigraphy of Bonai Conjur iron ore belt with special reference to exploration for iron ore in Goraburani, Sagasai, Sundargarh district, Odisha. So is it audible? Yes, sir, clearly. Okay, thank you. Sir, sir, ଆପଣ ମାଉସ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ୟାଦରେ ସାର୍ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ସାର୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। Sorry for the disturbance. So let us start with our topic, structure and stratigraphy of Bonai Conjur belt. So before going that, I would like to share some basic information with you. So this is the iron ore resource map of India. You all know the distribution of iron ore in India based on the occurrence and its enrichment. Different zones have been demarcated. So zone 1 is Jharkhand, Odisha. Zone 2, Chhattisgarh, Maharashtra. Zone 3 is Andhra Pradesh. This zone 1 is internationally very famous belt, that is the horseshoe belt. We'll be dealing in detail. The BK belt is located in this zone 1. Based on the quantity of iron ore production, 50%, more than 50% of the iron ore producing state is Odisha. Chhattisgarh 16%, Karnataka and Jharkhand, they also contribute a lot based on the iron ore production. Just we should have a little idea on exploration scenario in India. During 2015, total resource position of hematite was 22,487 million
and the resource position of magnetite was 10,007 tons. During the last 15 years, Geological Survey of India has augmented 500 million tons of hematite ore to the national mineral inventory. So these are the resource position in India. During 80s, we had 17,568 million tons. During next decade, during 80 to 90, increased 170 million tons. Again, during 1000, products by another 615 million tons. 2005, the production, and our total resource stood at 25,250 million tons. And assessment of resource as on March 2018 is 33,276 million tons. ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को जानना क्यों, एक्टिविटी के ऊपर हम रिसोर्स नया रिसोर्स ऐड करते हैं, जो नया फाइंडिंग के साथ नया रिसोर्स ऐड करते हैं, जिसके चलते हम अपना कंट्री का स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाते हैं. एंड वी आर सप्लाइंग not only raw material to our steel industry, and we are to some extent we are exporting also to generate foreign exchange, so that our country's economy we can contribute to the growth of the to the economic growth of our country. There are few exploration agencies carrying out this exploration activity. Today we are specially dealing with iron ore exploration. So Geological Survey of India has been given the mandate by Government of India to carry out exploration in the country. In addition to that, all state governments, state geological geology and mining divisions are there in each state of the country. So they are also doing exploration activities. And in addition to that, Mineral Exploration Corporation of India Limited and few other agencies are there. Mainly all government agencies are involved in active exploration work. मैं मेरा स्टूडेंट फ्रेंड को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो बेसिक नॉलेज अभी तक पढ़ा है, उसको फ्यूचर में एप्लीकेशन के लिए आप एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करेंगे, इट विल हेल्प यू. So now let us talk about this Banai Konchar iron ore belt. These are the greenstone belts in Odisha. You can see the bigger one is our horseshoe belt. This is right eastern side Gorumaisani belt, and Tamka Daitari and Gandhavardhan area. All are known for rich deposits. This is the location of the Banai Konjar belt, which lies to the west central part of the Singhbhum granite. To its west lies our Banai granite, which we consider as the basement for this BK belt. So this is a DM based on this SRTM data, and you can see the horseshoe synclinorium or horseshoe belt known for iron ore deposit. And geomorphologically, if we divide this area, we divide like this. Western ridge is having elevation of 850 meter plus. Eastern dissected, which you call eastern limb, eastern dissected highlands, 650 meter plus elevation, and southern plateau near Khandadhar, Malangtoli, Kadalia, those area is 900
plus elevation, and the central part, valley part, which you say earlier it was known to be occupied by only cell. It is the central valley part, Jamdakoida Valley. It is having elevation of nearly 500 meters, and there are small linear ridges within that valley part. सबसे पहले क्या था, हम लोगों को जितना हायर रीजेस है, वेस्टर्न लिम जो बोलते हैं, किरीबुरु से बरसुआ आपका खंडाधर तक, और राइट साइड में जोड़ा बड़बिल से लेकर आपका कदलिया तक, ये सारे जो है पहले हाईलैंड्स में आयरन, हाई रिजेस में आयरन मिलते थे करके, जितना मेजर आयरन और डिपॉजिट इस एरिया का हम लोग देखेंगे सारे हाई रिजेस पे पहले थे। एंड विथ टाइम जब सबका एक्सप्लोरेशन खत्म हो गया, देन स्कैरसिटी आयरन और का शुरू हुआ। देन हम लोगों ने सोचा कि लेट अस एक्सप्लोर द वैली पार्ट, दो इट वाज सेल कवर्ड, let us see what is there beneath it. So after that we took up some of the pioneer workers who have worked in this known belt. Jones 1934, Jones proposed a stratigraphy. Basically he demarcated the zone BHQ with iron ore bodies below cell, and it's below and there is another upper cell. During 1977, Saha and Sarkar worked. So they considered our Singhbum granite, phase A is the basement to this iron ore belt, and he introduced this basal sandstone is the base of the iron ore belt, and above that basal volcanics, then lower sulfilite and BSJ with iron ore, then upper cell, and Singhbum granite phase B is younger to the iron ore belt. And Murthy and Acharya in 1975, he introduced a new concept, mixed facies formation, which lies above the upper cell. So these always we should respect the earlier workers, and they have created huge database. This information we have to utilize, and based on our knowledge, we should proceed for field work when we are doing field work in this area. So this is a map you can see in the western part. This is the Horseshoe belt, and I have selected a small portion in Kirur Joda sector. This is the geological map. It was prepared by Geological Survey of India in 1:25,000 scale. So आप लोगों को सबको ये ऑल बेसिक्स मालूम है। एक मैप हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, पहले उसका ग्रेडिंग प्लेन मेजर करके प्लॉट करते हैं। उसमें अगर कोई फोलिएशन है तो फोल्ड्स है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका फोलिएशन प्लॉट करते हैं। अगर कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट प्लॉट प्लेन को प्लॉट करते हैं, और whatever field information you have been taught so far, और उसके बाद आपका जो फोल्ड का ज्योमेट्री, बेडिंग क्लीवेज रिलेशनशिप, ये आपका जितना थियोरेटिकल नॉलेज, ये सबका एप्लीकेशन ये मैप के ऊपर हम लोग प्लॉट करने के बाद फिर एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, और उस एरिया का स्ट्रैटिग्राफी हम लोग बिल्डअप करते हैं। तो ये मैप में बेसिकली आप देखिए जितना ब्राउन कलर है, दीज आर ऑल आयरन ओर रिजेस। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, दीज आर मेटावोल्केनिक्स, and light gray color that is your cell, upper cell, and ये जो white color आप देख रहे हैं, these are all lower cell. तो basically ये geological map what it speaks, ये हम लोग देखेंगे and उसको conclusion derive करेंगे. So during the study, all the workers they have found
the area has undergone 3 phases of fold deformation. And first phase and second phase folds are near coaxial in nature, and their superposition has led to hook-shaped interference pattern at places. सेकेंड फेज आप लोगों ने फोल्ड इंटरफेरेंस अपना कोर्स करिकुलम में पढ़ा है, तो अभी हम लोग जो है जितना नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, अभी वी विल अप्लाई व्हेन वी आर इन फील्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने नया एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे. सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंड फेज फोल्ड and third phase fold, these folds, they have got two orthogonal cleavages, and their interference pattern has led to dome and basin pattern in the area. So in these two photographs you can see right side, this is a miniature dome and a basin. So this has this is due to the interference of F2 and F3. And the first photograph you see, this is the same bed is folded here, and again it is refolded, and due to interference of these two folds, we are getting a hook shaped interference pattern where the iron ore bed thickness is increased, and wherever in the area we get this kind of interference pattern, there we get deposits in those locations. So these are some of the basalt rock we get there: metabasalt, amicular metabasalt, and baryolitic metabasalt. These are from field we get some basalt quartzite with well developed current bedding. This is a place called near Sargitala village, near Bansapani area, and we get well developed symmetrical ripple in Ingal Jharan area. It is very just south of Joda area. This I'll be showing you a mine phase where we get below iron ore. Above iron we are getting upper, this is a phyllite zone we are getting. So since we are getting just above the iron ore, we call it as upper phyllite, and above it we are getting a conglomerate horizon, thin conglomerate horizon, and top we are getting Kolhan quartzite. This photo you have already been seen. This is in Joda East mine, and due to this interference pattern is dominant in that particular area, and that is why we are getting very huge deposit. These are some field photographs in Joda East mine. You please go through all the fold asymmetry. If you see the southern, the lower photograph, western, it is a photograph from Joda East mine. We get dextral asymmetry. It indicates a synform is lying to the east. So you have to this is this type of field data you will get in field, but you have to apply knowledge, you have to apply, and you have to derive from its asymmetry. I am expecting a synform to the east. This is a photograph from where we get manganese below, and just above it we are getting iron ore. So basically आप लोगों को फील्ड वर्क करने के टाइम पे ऐसा लोकेशन पे जाके ऐसे हाफ हाजर्ड वे में कुछ डाटा मिलेंगे, देन आप इसको सिस्टमेटिकली अपना बाय एंड ऑफ द डे आप रिकॉर्ड करके अपना मैप में प्लॉट करेंगे दीज लोकेशंस, आप कहाँ पे कौन सा चीज मिल रहा है और किस टाइप का फोल्ड ज्योमेट्री है, असिमेट्री क्या है, रॉक टाइप का एरिया जब हम एक्सप्लोर करेंगे,
हम लोगों को इमीडिएटली कंक्लूजन नहीं मिलेगा, इट विल टेक इयर्स टुगेदर। और ऐसे ऐसे वो हम डाटा रिकॉर्ड करके अपना मैप में प्लॉट करते जाएंगे। दिस इज ए प्लेस, there is a village Damurda, near Damurda village, that a small ridge you can see red circle में we are getting this kind of photograph। ऐसा एक आउटक्रॉप मिला है। तो ये आउटक्रॉप में आप अगर देखेंगे द फोटोग्राफ इज फ्रॉम द सेम आउटक्रॉप बट इट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। Photograph what you see in the left, that photograph is facing north। आप इसका फोटो फोल्ड सिमेट्री अगर आप इसको बिल्डअप करेंगे तो आप इसमें से क्या डिराइव करेंगे? द सेम फोटोग्राफ is taken from which is facing from south। in both the cases what we see, it indicate an antiform lying to the west। तो अगर मैप में आप जाएंगे जो रेड सर्कल को देखेंगे, इससे हम डिराइव कर पाते हैं कि एक एंटीफॉर्म वेस्ट को अगर है तो वो एंटीफॉर्म का जो एक्सियल प्लेन दैट हैज बीन इरोडेड और को फॉलो कर रहा है, देयर इज ए रिवर, इट इज कैरो रिवर। सो इसी टाइप का फील्ड का डाटा से हम लोगों को फील्ड इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज ए synclinal closure part of a fold in BIF in that ridge। तो इसमें ऑलमोस्ट इट इज हॉरिजॉन्टल पार्ट, हम देख रहे हैं बेडिंग, ये क्लोजर पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अगर आयरन और बॉडी है तो आगे ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमको अपना एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। दिस इज ए फोल्ड, आप इसमें देख रहे हैं वेस्टर्न पार्ट में, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न लिम्ब ऑफ द हर्सू सिंक्लिनोरियम। इसमें आप देख रहे हैं देयर इज वोल्केनिक्स और ये BIF है। तो वोल्केनिक्स एंड BIF बोथ हैव बीन को-फोल्डेड, तो एरिया डिफॉर्मेशन हुआ है और ये क्लियर कट कॉन्टैक्ट हम देख रहे हैं और फोल्ड ज्योमेट्री से हम डिराइव करेंगे व्हिच वन इज ओल्डर एंड व्हिच वन इज यंगर। This is a clear contact you can see BSJ with volcanics। On the lower photograph we are having a clear contact with BSJ with phyllite। आप सबको बेड का डीप मालूम है और यंगिंग डायरेक्शन आप डिराइव कर सकते हैं, कौन सा रॉक यंगर है कौन सा रॉक ओल्डर है। तो ये हम लोग आपको वर्चुअल फील्ड वर्क करा रहे हैं जो कि फिजिकली हम लोगों को फील्ड एक आउटक्रॉप इस टाइप का मिलने के लिए we may have to walk for 2-3 kilometers or after few days we may get similar kind of this kind of outcrop। इसीलिए हम लोगों को जिस स्केल में हम मैप कर रहे हैं वो हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम 1:2000 में कर रहे हैं तो हमको कितना मीटर पे एक डाटा लेना है। अगर हम 1:25,000 में कर रहे हैं एटलीस्ट हमको 250 मीटर में एक डाटा हमको लेना है मैप बनाने के लिए, जियोलॉजिकल मैप के लिए। सो दिस इज a photograph from the western part near Kalta Ridge, Kalta Roxy area, where we are getting this stretching lineation developed on myelonetic foliation। So that we consider this is to be the western margin of this iron ore belt. Beyond this, we are our belt is not continuing iron ore। So these are also some photographs near Khandadhar area, folds in BIF having northwest southeast trending axial plane cleavage। And so my purpose of showing all these field data, based on this field relationship we have derived this stratigraphy for the entire iron ore belt
that is BK belt. So we conclude from these field observations, Singbum and Bonai granite with enclaves of OMG considered to be the basement for this entire iron ore group, which this IOG lies unconfirmably above this Singbum and Bonai granite. At the base of this iron ore group, we get a quartzite with quartz pebble conglomerates. आपने field का कुछ photographs देखा, quartzite with current beddings. So we considered that to be the base for this iron ore group. Then after that, we have placed these basic volcanics, which is occupies all the rim of this Horso belt, Bonai range in the western part, Lotabani volcanics in the middle part of the iron ore belt, Jagannathpur volcanics in the western part of this iron, that is to be the eastern part of the iron ore belt, and to the southern part of the. So many authors, they have considered these volcanics to be times. So this is a challenging area for us to work in future, and whether all the volcanics these activities took place at the same point of time or in different episodes. So many workers are still working on it, but all these are considered here based on this field observation to be the basement. They lie along just above the quartzite and quartz pebble conglomerate. Above it, we are getting the lower phyllite sequence. एक क्वारी आप लोगों को दिखाया था जिसमें मैंगनीज मिला बिलो आयरन ओर. So that manganese is hosted by this phyllite unit, which lies just lower phyllite. इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आयरन का it is based on field observation, उसको lower phyllite sequence पे रखा गया है. And at places we get ferruginous phyllite, impure arenite, brecciated chert and dolomite within that sequence. Above this we get the PIF horizon, जिसमें कि हम लोग banded hematite jasper मिलता है, banded hematite quartzite मिलता है, and with minor banded magnetite quartzite. ये आयरन और बेल्ट पीके बेल्ट जो है हॉर्सशू बेल्ट है, इसमें बहुत कम मैग्नेटाइट है. बेसिकली वी गेट हेमाटाइट ओर इन दिस एरिया. And upper phyllite sequence, it is rich in alumina, and at places where condition was favorable, bauxite patching, famous belt, we get three types of mineralization in this belt. We get iron, we get manganese, and we get that is some of the places where we get bauxite. It is Kadalia Plateau. Some of you may be knowing this Malali Plateau. There is village Kadalia. In those areas we get bauxite, but that bauxite is superficial up to maximum depth of 20 meters. Beyond that we do not get bauxite because in those areas beyond get money. Based on this field data, अभी आप लोगों ने जितना सारा नॉलेज गेन किया है, अब जब फील्ड में जाएंगे इसको अप्लाई करेंगे, then this is the way we build up the stratigraphy for any area. And why we build up the stratigraphy? Because it helps us. अभी बहुत सारा आपको ड्रिलिंग, डिटेल मैपिंग और बोरहोल प्लानिंग, ये सब का बारे में
डॉक्टर बारिक ने आपको बहुत आइडिया दिया। सपोज आई डू नॉट नो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द एरिया, मेरा ड्रिलिंग हम जब करेंगे यहाँ पे बोरहोल बंद करना है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, एंड कॉस्ट जो है इट इज गवर्नमेंट मनी, इट इज पब्लिक मनी। तो हम आंख बंद करके खाली ड्रिलिंग हर एरिया को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जब करना है, कोई एक्सप्लोरेशन एजेंसी पे फ्यूचर में आप लोग काम करेंगे, उससे पहले उस एरिया का रीजनल जियोलॉजी आपको बहुत अच्छा से मालूम होना चाहिए, एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। कोई डाउट है तो आपको इमीडिएटली उसको क्लियर करिए, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो अभी तक हम जस्ट I had given a brief introduction about the belt and its structure and about its stratigraphy. So now this Ghorapurani Sagasai block, I am giving you a case study how it was explored by Geological Survey of India. This is the outline map of this horseshoe synclinorium showing the leasehold and free status areas. This map, it was from 2008 only. Now it might have been updated, and this blue location you see, that is the Horaburani area, which we have chosen to carry out our exploration activities, and it is in the Jamda-Koira Valley. So from that, we first, हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले एरिया का जियोलॉजिकल मैप लेना है। जियोलॉजिकल मैप जो प्रिपेयर्ड था 20,000 स्केल में, फ्रॉम दैट वी हैव सिलेक्टेड ए स्मॉल टारगेट एरिया बेस्ड ऑन सम इंडिकेशंस, जो लाल बैंड्स रेड कलर का आप देख रहे हैं, these are some iron ore indications prepared by those workers जिनको जस्ट एक सरफेस इंडिकेशन मिला। और उसके बाद बेडरॉक सैंपलिंग पे आयरन ओर का अच्छा रिजल्ट वैल्यू आया। देन वी थॉट ये एरिया को हम लोग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। इस एरिया में हम लोगों ने अभी जो फोल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की बात की थी, दिस इज ए फोटोग्राफ फ्रॉम साउथ ईस्ट कॉर्नर द मैप। इन दिस एरिया हम लोगों को इस टाइप का फोटोग्राफ मिले। बाकी जितना व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा सॉइल है, दिस इज सेल है, सॉइल अलुवियम व्हाइट कलर, एंड जो ब्राउनिश कलर देख रहे हैं दैट इज सेल्फिलाइट। Only red portion you see, these are some indication of iron ore bands, and you do not have much control over this area. आपको बहुत डाटा भी immediately नहीं मिलेगा, but ये एक जो हम लोगों को डाटा मिला इस ब्लॉक का नियरली साउथ ईस्ट का 6 to 7 किलोमीटर के दूर में, तो इसमें से हम लोगों को ये समझ में लगा कि getting this kind of fold interference pattern in this area. So ये जो ये डोमेन है फोल्ड इंटरफेरेंस का हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग दिमाग में रख के we started our activities. उसके बाद क्या होता है, हम लोग डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग 1:2000 स्केल में, जो कि बहुत लार्ज स्केल मैपिंग होता है। तो एक जैसे हम लोग स्कैन करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, एक 2000 स्केल में हम लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को लेके पहले इसको स्कैन करते हैं पूरा इंच बाय इंच। तो जिसमें व्हाट वी ऑब्जर्व, इसमें आयरन और बैंड, टॉप लेफ्ट फोटोग्राफ में आप देखिए आयरन और बैंड हमको दिखा, उसके बाद सेल इंटरकालेशन दिखा, और एक सागासाई विलेज के पास एक ट्वीट में वी आर गेटिंग आयरन ओर सरफेस में, और उसके बाद सेल
इंटरकलेक्शन देख रहे हैं। तो मुझे मेरा दिमाग में स्ट्रैटिग्राफी है, तो स्ट्रैटिग्राफी को बैकग्राउंड में रखते हुए फिर फर्दर हम लोग इसको डिटेल मैपिंग बनाते हैं, जिसमें पूरा आपको जितने टाइप का लिथोलॉजी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रहता है, सारे लिथोलॉजी आते हैं। उसका अगर कोई डाटा आपके पास है, स्ट्रक्चरल डाटा, वो भी हमारे पास आते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एक बार हमारा जब जियोलॉजिकल मैप क्लास बन गया, तो इसमें से फिर हम देखा कि मेरा और बॉडी किस तरफ ड्रिप कर रहा है। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखें मोस्ट ऑफ देम आर शैलो डिपिंग। आपको बोरहोल प्लानिंग के लिए एंगुलर बॉडी होने से एंगुलर बोरहोल पे जाना है। अगर शैलो डिपिंग है तो हमको ये डोमेन को हम सिलेक्ट किया कि दिस इज सुइटेबल, मेरा बोरहोल्स में यहाँ पे वर्टिकल बोरहोल्स पे जाऊंगा, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी लेसर डीप इन माय आयरन और बैंड्स। तो ये दो सेक्शन जो ब्लॉक में आप देखिए, आई विल बी शोइंग यू नेक्स्ट। हमने ऐसा करके देन बोरहोल प्लानिंग जो है ग्रिड पैटर्न पे हम लोग करते हैं, दैट ऑलरेडी यू हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बैरिक। एंड ये जो बोरहोल हमने दो सेक्शन जो प्रोफाइल में मैंने ड्रॉ किया और इस पे हमने जो बोरहोल्स दिया, तो वी हैव इंटरसेक्टेड जो रेड कलर बैंड देख रहे हैं हम लोगों ने उसको ऑल आयरन और बॉडी वी हैव इंटरसेक्टेड। उसके बाद हम लोग उसको केमिकल एनालिसिस के लिए लेते हैं, जो कि कोर लगिंग आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कोर लगिंग करने के बाद फिर हम उसको टेक इट फॉर केमिकल एनालिसिस। उसके बाद हम लोग को केमिकल से आयरन ओर का जो ग्रेड पता चलता है। अगर अच्छा ग्रेड हो गया तो फिर हम एक बोरहोल पे इंटरसेक्ट हो गया तो वी प्रोसीड इन ए ग्रेड पैटर्न। फिर डिफरेंट जो आपको G2, G3, G1 जो स्टेजेस सब बताया गया, सो डिफरेंट स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए हमारा बोरहोल स्पेसिंग अकॉर्डिंगली वेरी करता है, इट इज स्पेसिफाइड ऑलरेडी। सो इसी तरह हम लोगों ने नियरली 26 बोरहोल्स इसमें ड्रिल किया, और ड्रिल करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी सॉ, we are intersecting this iron ore nearly up to 80-meter depth, so it is quite encouraging for us। फिर सारे बोरहोल का डाटा लेकर हम लोगों ने क्या किया, इसको एलवी सेक्शन बनाया। तो एलवी सेक्शन बनाने के बाद अभी आप देखिए सब सरफेस स्ट्रक्चर का बारे में भी हमको थोड़ा बहुत इसमें से मालूम पड़ रहा है। जैसे कि सरफेस में हमने जैसे डोम बेसिन पैटर्न दिखा था, मुझे करीब करीब उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर नीचे भी दिख रहा है। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आई एम गेटिंग दिस इंटरफेरेंस पैटर्न माय इन दिस डोमेन, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ फोल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान माय एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी। मुझे अगर सपोज एक बेसिन मिल गया नेक्स्ट बोरहोल के लिए, अगर इस पे आप 8 नंबर बोरहोल देखिए, there we are getting very huge thickness of iron ore we are intersecting in that particular borehole because that is a basinal part। and लेफ्ट साइड में 9 बोरहोल में देखिए वहाँ सरफेशियल थिकनेस में हमको बहुत कम आयरन ओर मिलता है। तो लाइक दिस मुझे कम मिला करके आई विल नॉट प्रोसीड टू फर्दर वेस्ट बोरहोल 10 ड्रिल नहीं करूंगा या 12 ड्रिल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए
आप लोगों को बहुत केयरफुली जब एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होंगे, यू हैव टू प्रोसीड वेरी केयरफुली. So this is the area what we have selected, and we have this is the detailed map with along with borehole locations. And आप लोगों को ऑलरेडी और रिजर्व एस्टिमेशन भी पढ़ाया गया है कॉलेजेस में, एंड मॉर्निंग सेशन आल्सो डॉक्टर बारिक हैज रिफ्रेश्ड योर मेमोरीज. And based on this data, by utilizing suitable cross-section method, we have calculated the resource for this entire block, and it all came to be 123 million tons. You just in the northern part of this Sagasai area, that east block I am showing you, this is the dam of that area. Just you please all see, इसमें हमको सेल लैटराइट सॉइल अलूवियम के अंदर में जस्ट थोड़ा सा टुकड़ा का आयरन ओर दिख रहा है. सो दिस विल बी गिवन एन एरिया जिसमें कि आपको बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच से प्रोसीड करके you have to explore a deposit. उस एरिया का जस्ट सरफेस में हम लोगों ने देखा कि सरफेस में आयरन ओर बहुत कम है. ये मैप हमने बना दिया. EF एलोंग अगर आप सेक्शन देखेंगे तो सरफेस में मुझे कहीं पे आयरन ओर नजर नहीं आ रहा है. बट वी हैव प्लान द बोरहोल्स हम लोगों को, क्योंकि हमारा कुछ एरिया के ऊपर कुछ कंट्रोल आया जिसके ऊपर हमको लगा कि नहीं, जो एलबी सेक्शन हम लोग बनाए थे एलबी सेक्शन से लगा कि नहीं वो आयरन ओर इसका नीचे जा रहा है. तो ये जब हो जाएगा फिर आपने कॉन्फिडेंटली बोरहोल प्लान करेंगे. तो हमने पहला बोरहोल दिया तो वी हैव इंटरसेक्टेड आयरन ओर. SSB8 जो है उसमें देखिए बहुत अच्छा थिकनेस आयरन मिला है. ACB4 में देखिए एट ग्रेट डेप्थ हमको मिला है, क्योंकि दैट इज आफ्टर 35 मीटर ओवरबर्डन करके. तो वो 35 ओवरबर्डन आपको कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आप आपका एजेंसी विल अलाउ यू 35 मीटर ओवरबर्डन थिक बैरन जाने के बाद अगर आपने और मिला, सो दे विल अप्रिशिएट यू. और इन दिस सेक्शन आप देखिए यहाँ पे हमको करीब करीब सरफेस में ही और मिल रहा है. और और का जो है नेचर, जो सबसरफेस नेचर देखिए टुवर्ड्स राइट साइड, वो भी इधर डोमल पार्ट है और राइट साइड को बेसिन बना रहा है. So these are some lithologs showing value. We are getting very good iron percentage, more than 61%. And here we see this is LV section. Here also one from left to right, if you see, the iron ore body is open towards both the ends. That means जो yellow soil alluvium area हम देख रहे हैं उसका to plan my कुछ ने हम लोग को जो मिला लाइट ब्राउन कलर पाउडरी और मिक्स्ड विथ सेल जिसमें कि आयरन कंटेंट कम रहेगा, और जो आपको डार्क कलर दिख रहा है ब्लू डस्ट, so it gives us more than 65% of iron ore. And here in this particular borehole we are getting blue dust at 72 meter depth. कुछ फोटोग्राफ्स है. दिस इज आप लोगों ने पढ़ने के टाइम पे बारे में सुना. ऑर्थोगोनल और इज ए काइंड ऑफ फ्लेकी और जो कि एक बिस्किट है इसको, सो इज नोन एज हेमाटाइट. और कुछ पेट्रोग्राफिकल सिग्नेचर आप देखिए, मेनली गोएथाइट, एंड एट प्लेसेस possibly in gold भी हो सकता है. So all total we have drilled 26 boreholes in 200 into 200 meter grid pattern, and iron content हमको 63 जो कि कट ऑफ ग्रेड 55% पे हमको मिला है. तो एफी कंटेंट एवरेज कंटेंट इज 63. तो हमने रिसर्च रिजर्व जो कैलकुलेशन किया एट कट ऑफ
55%. So total resource estimated in this block is 132 million tons. And this block has been auctioned in the year 2016, and SR Steel was the company to got this on auction, and most probably they might have started some active mining in this area. Thank you. Dr. Barik? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your nice presentation. So I request all the participants to interact with sir, so that if you have any doubt or queries, he can clear. So you're requested to directly unmute your microphone and ask, or else you can put in your chat box also. Any queries, please? So I think there is no query. So I think they have Okay. already. Okay, anybody, if you have any query also future in mind, you please contact our Geological Survey of India Training Institute through mail. You can also clarify your doubts. Yes, sir. Already we have a WhatsApp group, so they can post there. Okay, please. You can put your queries in that WhatsApp group. We'll be happy to resolve your issues. Yes, actually, this particular training program, it's a huge training program, and to cover within 2-3 lectures, it's a very big task actually. So we understand if you still have any query, and still you need further explanation or clarification, so you are free to communicate anytime. So if no queries, then we can conclude the session here itself. Deepika, what is some message has come? Sir, she is asking, sir, is there any specific guidance to iron reserve? Specific guidance to iron reserve. Ma'am, actually, we are unable to understand iron reserves to calculate, or what for the guidance? Means, can you please elaborate? If it is for iron reserve estimation, yes, there are guidelines. Okay, how to identify iron is present? Okay, let me take this question. Yes, sir. Once you work in an area, you have to collect surface samples. Surface samples, you have to get bedrock sample, then you have to get it, make it powder, you send it to different labs. Once you are confirmed that you there is present iron you are getting, suppose say you get 45%, that means surface sample पे हमको अगर 45% iron ore मिल रहा है, तो there is all likelihood मुझे नीचे आयरन का प्रेजेंस है. मे बी सेम 45 मिले या ज़्यादा वैल्यू का भी मिल सकता है. तो इसलिए हमको सरफेस सैंपलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दिस सरफेस डाटा ओनली वी कैन proceed with our activity, we can carry out our future exploration activity, जो कि हम लोगों को बड़ा डिपॉजिट तक ले सकता है. Is it okay? सर हम न्यू प्लेस को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, लाइक
बेस्ड ऑन ओल्ड रिपोर्ट ओनली हम और आयरन है और है या नहीं एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन न्यू प्लेस में है या नहीं हम कैसे मालूम होगा? यस, न्यू प्लेस में हम कहीं पे जब करते हैं हम उसका रीजनल जियोलॉजी पहले एक पूरा कंट्री का आपके पास 50,000 स्केल में जियोलॉजिकल मैप्स आर अवेलेबल। तो आप उस जियोलॉजिकल मैप जब लेंगे, इट इज अवेलेबल इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल मैप से आपको उस टॉपोसिट का पर्टिकुलर एरिया का आपको लिथोटाइप्स का ऊपर और उसमें भी सम एनालिटिकल रिजल्ट्स भी रहता है जब वो रिपोर्ट्स आप अवेल करेंगे। तो उसमें से पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर आपका इंटरेस्ट जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे उसको जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको लगा कि सम पर्टिकुलर एलिमेंट इज गिविंग सम गुड वैल्यू, तो उसको आपने ब्लॉक एरिया करके सिलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग जितना प्रोसीजर अभी पिटिंग, ट्रेंचिंग और जो आपको बताया गया स्काउट ड्रिलिंग, ये सब एक्टिविटी जो है ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है जी। तो आप उसको पहले 12,500 स्केल में एक एरिया मैप करेंगे, तो वो मैपिंग करने के बाद फिर आपको और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर उसके बाद आप इसको नेक्स्ट हायर स्टेज में G3 या तो G2 स्टेज में फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी पे ले सकते हैं। तो जब G3 G2 पे जाएंगे फिर क्लोज स्पेस ड्रिलिंग आप करेंगे, तो उसमें से आपको सब सरफेस का और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने लगेंगे। तो उसके बाद अगर वहाँ पे एनकरेजिंग इंटरसेक्शन हुआ आपका बोरहोल में, तो इट विल गिव यू टू a deposit. Is it okay? ओके सर, थैंक यू सर। Okay, so is there any further question? नो सर। Okay, thank you, ma'am. So once again, if you have any questions or query, you can put in the chat box. WhatsApp message, so that it can be answered. And I'll request our faculty members to give their presentation in PDF form, so that if you wish, we can post the PDF version of the presentations. So that will help you to refresh your whatever you understood today. So you can refresh those. So yes, shall we end, sir? Yes, we can conclude here. Yes, sir. So thank you all. Thank you, sir, as well as thank you all the participants for hearing us in a pleasant manner. So thank you all. Sir, with your permission, sir, shall we end this session now? Okay. I think Dr. L.R. Sahu wants to speak something. Yes, sir. Sir, please, sir. Okay, thanks a lot, GSI Hyderabad. Thanks, Arjit. Thanks, Shama. And the first speaker was a very nice speaker. He was also discussing lots of things. The students used to dream to join GSI, but they are attracting the peoples like you who are working in the field directly. So I hope they will be inspired by all your talks and interactions. This is a very nice program. I thank you all to give the message to us to join the students along with you in this discussion. And I hope the students will be inspired a lot by getting all these field data and the way you have delivered both the three speakers delivered their talks. The students will be inspired to go to the field, because with the academicians, what we do, whatever the theoretical things within the books or whatever we have gathered the knowledge, we are discussing with them. So you people are discussing the things what you have done in the field, or direct observations, your experience you are sharing with the students. That is a great thing. Perhaps I think the students will be more inspired by this kind of talks to be involved in geology and to make their career with geology. So thanks a lot. And again, I will request you to send all these materials to the students, because maybe some technical issues are there, or so maybe some net problems are there. Some may not completely attend this program.
but when they will get this kind of materials, then that will be helpful to them also. So thanks a lot. And this kind of programs are most welcome to the colleges. As in when you just have times just to do interact with our students, that's what I request you. And the students will be highly beneficial. If you will focus on a single college also, that can be done, just like a webinar. Here you have taken a vast platform, and the people are visiting to the college also in the nearby camps from the GSI camps. They are visiting the college also, directly interacting with the students. That's what the GSI is doing, like a great job. They are taking directly the offline classes also before COVID situation at Government College Sundargarh. So thanks a lot for your nice presentations and enrich the knowledge with the iron ores, which is the most important, valuable ore in Odisha. So thanks a lot. Thank you, Dr. Sau, and thank you all the participants for attending this training program. And in future also, we hope the same. We will look forward to continue this kind of interaction, and we will be happy if we can share the knowledge, and it will be beneficial for the student community for their future career. So thank you one and all. Thank you, Dr. Bari. Thank you, Dr. Srikanth. Thank you all. Sir. Thank you, sir. Okay, namaste.